Renaissance up 1-0 against Iceland. As I always say, I don't know why you gotta pull the smile there. I mean, I think you're smiling after some of these games. 2-0 against Iceland. An amazing team, Iceland, but Renaissance on fire. Yeah, I mean, their whole performance until we saw them square off against Blackhand on stage is definitely smile-inducing. They looked oppressive, impressive, and ready to go. Here we go. Blackhand versus No Show. I mean, these two teams are amazing. Blackhand, as I'm sure you know at this point, has made their way all the way to the grand finals. So No Show showing up and playing incredible games against them is extremely impressive. No Show, the team from Korea that made it the furthest into this tournament. Blackhand is holding it down the sword, finding its mark, and I love seeing Jungle Book back on that Cinderace. I love Jungle Book on that Cinderace. Will we see it in the grand finals? I am तो not क्या sure. सीन है नेट चला गया था रे मेरा Right here you can see Overlord on the sword down there, and look at this big secure here. Game हेलो भाई मेगा भाई वेलकम टू द स्ट्रीम भाई वंस अगेन भाई डबल साउंड काय का डबल साउंड आ रहा है And then pivot to the objectives, and that's exactly what they did here in that game. Blackhand looking great. आ रहा था ठीक है अब तो ठीक है ना भाई क्या लगता है कौन जीतेगा भाई टूर्नामेंट Yeah, I mean, obviously they know that they have a lot against them. Blackhand is not going to give them any room to work, but No Show kind of putting it in to the best of their ability. But here it's Curios. कहाँ भाई कहाँ निकल गए थे अरे यार लाइट चला गया था फिर नेट ही नहीं आया भाई मेरा फाइनल मैच कब है भाई अभी होगा रे आज ही होगा ना फाइनल मैच यार एक तो पता नहीं भाई नेट का क्या सीन है यार कभी भी चला जाता है यार हेलो भाई शिवम भाई हेलो ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम भाई लाइट भी चला गया ऊपर से नेट भी नहीं आया फिर लाइट आने के बाद ब्लैक हैंड के पास एडवांटेज है ये लो भाई साला नेट को भी आज ही दिक्कत देना था भाई इसको score 418 to 302. They win a huge fight. They push Blackhand back. 4 members down. 382, 482. वीसी हाँ आ रहा हूँ कैसे हो इको ब्रो भाई मैं बढ़िया हूँ भाई तुम बताओ यार Looked good there, but Blackhand ultimately takes that series. Next up, we had IX Gaming versus Eternity with Seiju on that green. Yeah, and I guess the big question from the Ginyu squad here कौन सा वाला विषय बैठा how far were they going to go in this tournament? You know, this was a team that came second place out of the North America region. Always an amazing team, but you never know what that's going to look like on the world stage. And in their group stages, they really did an amazing job. And here against Eternity, they really showed what they could play. Yeah, absolutely. In the face of adversity with a unique composition, Eternity coming to them with different looks, hello, and hello. IX Gaming adjusting well and finding a way to win here. Yeah, looking incredible right here, taking it to the sky. Let's go, Nudo. Nudo known for the absol. कहाँ से हो इको ब्रो भाई महाराष्ट्र नागपुर क्या लगता है भाई कुलदीप क्या होगा भाई भाई टी2 वाला मैच देखा क्या हाँ टी2 वर्सेस किसका अपना रैंडम गेम नॉन स्पोर्ट्स हाँ नॉन स्पोर्ट्स और भी इससे पहले जो हुआ वो हाँ देखा भाई क्या निकाला भाई नॉन वही ना अबे वो भाई पूरा ही मतलब अलग खेल रहे थे वे मतलब अलग ही स्ट्रेटेजी स्लो ब्रो उठाया ना भाई गेम चेंजिंग उठा दिया भाई उन लोगों गेम ही बदल दिया स्लो ब्रो ने फिर यार भाई यार मैं बस देख रहा था लाइट चला गया और लाइट के साथ नेट भी चला गया मेरा टीटो वाले ने हक दिया क्या क्या होता है उन लोगों ने हाँ पुश किया सेकंड बेस पुश किया ठीक है ऑल बैक लेके टॉप बेस जाना था उन लोग को वो सेंटर पे चले गए ऊपर से मामे ने अल्ट भी नहीं खुला उसके बाद पड़ा था कब ऊपर का बेस बचे थे उनके दोनों बेस बचे थे इजी पुश था वहाँ पे तो बोल रहा है टॉप बेस पे तो इजी ओवरडंप हो जाता फिर इक्वली हो जाता ऑलमोस्ट फिर एक ही गोल करना रहता सेकंड बेस पे हो जाता तो सेंटर पुश किया सेंटर पे भी अल्ट नहीं खोला उसने सब मर गए बिना अल्ट खोले मर गया वो देखते हो किसका इसका मैच है ये तो यही है नॉन स्पोर्ट्स वर्सेस रेनेसांस ब्लैक एंड के साथ होगा फाइनल जिसका भी होगा मतलब ब्लैक एंड फाइनल्स में ना सीधा फाइनल में बैठी है वो तो कब से बैठी है आराम कर रही है फेस रिवील कर दो नहीं भाई ये नहीं होगा भाई इस रेनेसांस के साथ भाई रेनेसांस वाले निकाल देंगे पर नॉन स्पोर्ट जैसा बीच बीच में चेंज करती है ना भाई जैसे एक मैच हारती है भाई चेंज सीधा चेंज एक कैरेक्टर और वही गेम जिताता है भाई उन अपोनेंट को पता नहीं रहता ना क्या खेलेगा करके
और भाई ये सिल्वियन वाला निकला उन लोग ने, ठीक है। अभी सिल्वियन वाला हारे तो फटक से स्लो रोल आ गया। हाँ वही सिल्वियन माइम लाए थे, फिर उसकी जगह चेंज कर दिया भाई। देख रहा है नहीं चला तो डायरेक्ट चेंज। पीटू वाले ने भी ये पिक बचा के रखा था बे। पीटू वाले ने भी पिक बचा के रखा था, टैंक वाला ड्रैगनाइट वाला कॉम। हाँ फिर भी अच्छे खेल रहे हैं, बहुत सही खेल रहे हैं टीटू वाले। फाइट क्या निकाल रहे थे भाई वो लोग, सोचना। उनका सरीना हर बार नहीं आ रहा भाई रेड पे, ठीक है। हर बार ग्रुप फाइट सोलो हो रही है उनकी, मतलब वो अकेले लड़ रहे हैं, उनके सामने वाले 4-5 बंदे लड़ रहे हैं एक बंदे से। उसके बाद भी लेवल सेम में एंड पे, बस क्या खेल रहे हैं। टीटू मैम के लिए बुरा लग रहा है। शक्ल कैसी है आपकी भाई? जब रिवील करूंगा तभी देख लेना भाई। क्या करोगे भाई मेरे शक्ल से? करना क्या है भाई तुमको? वापस स्ट्रीम भाई, फिर क्या भाई? मैच थोड़ी ना खत्म हुआ। वही ना भाई, 500 हुए भाई इतने टाइम के बाद। साला दो सब्सक्राइबर 2 दिन से नहीं हो रहा था, नहीं तो कल से नहीं हो रहा था। तेरा तो है, अपना तो हो रहा ही नहीं है। अबे तो डालेगा तो होगा ना भाई। डालने के लिए टाइम आ गया, मैं बोल रहा हूँ ना आज। अरे मैं सरीना खेल रहा था, ठीक है आज। और इतना सेक्सी निकाला मैच, इतना सेक्सी निकाला, ठीक है। मरा ही नहीं पूरे मैच में, पूरा मैच निकाला। उसमें भी एक जरा ऑफलाइन चलेगा भाई, इतना डोमिनेट करने के बाद भी ऑफलाइन चले गए अपने जंगल। कब करोगे फेस रिवील? देखते रहे, जब टाइम आएगा तब कर देगा भाई फेस रिवील। फिर भाई जैप फाइट निकाला, जैप फाइट में भी एक बंदे को 2 बंदों को निकाल दिया भाई। सब बंदे इधर बिना अल्ट मारे मर गए गधे की तरह। उसके बाद ये आया एजे स्लैश है जिंदा होके। एजे स्लैश ने अल्ट मार के चुरा भी लिया। हमारा जेरा फिर भी खड़ा है एक जगह पे। हार गए भाई। भाई अब रैंडम में सीन होता है भाई। 5 मैन होना है। 20-30 पॉइंट से मारे भाई, 20-30 पॉइंट है, समझ रहा है। पूरा कैरी करने के बाद हारे। उसके बाद में ना पुश किया गधों की तरह। मैं गया, मैं उधर अंदर जाके भी 3 बंदे मारा, ठीक है। उधर जाके बंदे ही नहीं गोल मारने के लिए, उनके सिर्फ 1 का 2 बंदा बचा था, पता है। बंदे ही नहीं मारने के लिए, मैं अकेले कितने को मारूं पुश करने के लिए। आया ही नहीं, कोई आ रहा ही नहीं बंदा। क्या पता कैसे क्या सोच के खेलते। कौन सी क्लास में हो आप भाई? इंजीनियरिंग चालू है, क्लास तो हो गया मेरा खत्म। 5वीं में 8वीं में 1 के सबस पर होगा फिर। हाँ भाई आपके साथ कौन है भाई? कुलदीप भाई बैठा है मेरे साथ। कुलदीप भाई के साथ वॉच पार्टी हो रहा है। भाई ये कितने बार दिखाया कर रही है एलिगेंट है भाई, 5 चड्डी जैसा कुछ भी। अरे वो तो दिखाएगा ना जब तक मैच चालू होगा भाई। मेरे था ना भी नॉन मेरा दिमाग खराब हो गया था मैच जीतने के बाद, सच बोल। टीएफ ईवेल वाला। हाँ भाई हाँ पूरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। जॉब लगने की कितने चांसेस है तुम्हारे? क्या पता भाई, अभी तो टाइम है रे जॉब के लिए। अभी तो सेकेंड ईयर में हो भाई। कितने मार्क्स आए थे JEE मेंस आपके? भाई दिया ही नहीं भाई JEE मैंने। 11-12 किया ही नहीं भाई मैं, सीधी बात भाई। JEE का टेंशन नहीं दूर भाई। कौन पढ़ेगा भाई, इतना नहीं पढ़ना भाई मेरे को। JEE मेंस भाई, सीधा 10th के बाद डिप्लोमा किया भाई 3 साल का। उसके बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम 2 साल। मेरे दोस्तों ने भी JEE के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है। 12 के बोर्ड के क्लासेस भी लगे। उसका रिजल्ट देखा ना, मैं बोला बेंचो इतना मार्क्स में बिना पढ़े भी ला लेता JEE में। भाई कौन इतना पैसा लगाएगा भाई JEE के पीछे? भाई माइनस में मारते वो लोग को। JEE के बिना इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे मिला भाई? बोल तो रहा भाई 10th के बाद तुम 3 साल का डिप्लोमा करो, तुमको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर डिप्लोमा अच्छे मार्क्स है तो बिना JEE के अच्छे कॉलेज मिलेगा तुमको। ये जो दिखा रहे हो सारे टीम का किया था क्या लोग ने? हाँ सारे टीम का। TF ईविल ने देख रहा है क्या आपका फेस? नहीं रे, उसने भी नहीं देखा है। अरे हाँ देखा है शायद, देखा है उसने देखा है। हाँ देखा है। हाँ बस वो भी 3, 4 साल पूरा नहीं फोटो देखा उसने। क्या
two gentlemen at the end, if you'd like to come up. Congratulations, you've won. 3.5 नहीं रहे, उतना नहीं, हाँ 2-3 साल पुराने तो हुई होंगी फोटो। And how do you feel about the losing? IIT बॉम्बे है क्या आपके पास? He doesn't care. IIT बॉम्बे नहीं रहे, IIT वगैरह नहीं है भाई। Yeah, I do. NIT है, A bit sad. Yeah, okay. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में। NIT है भाई, Good job. VNIT है। How do you feel about your win today? It was the easiest game of my life. Oh, It was. मुझे दिखाओ, क्या दिखाओ भाई तेरे को? क्या देखना है तेरे को? lost. And you're happy with your win? Yeah, definitely. We already predicted this long back. मैं खाना You're खा going to win. Yeah, we knew we were gonna win. Okay. He seems वैसे भी मैच चालू नहीं very होने वाला। happy that he's टाइम है मैच चलाने को। If you struggle to आ रही है। accept defeat, चूल मच रही है आपका फेस देखने के लिए। भाई वो देख लो भाई, मिराज दिख रहा है, उसको देख लो भाई। thank you, मजे ले लो gentlemen. उसको। I am कौन सा delighted कोर्स to है say इंजीनियरिंग you में? have भाई passed मैकेनिकल the इंजीनियर। etiquette training today. I hope these मैकेनिकल techniques इंजीनियरिंग will चल रहा help भाई। you next time you find yourself in a formal British setting or indeed have the pleasure of meeting the Queen. Thank you very much. Hello everyone. Mechanical is very Welcome to the nice. Pokémon ठीक है Unite भाई। World Championship Series. Kirk Dukes next आप today. बेरोजगार हो क्या भाई? अभी पढ़ाई चल रही है तो भाई बेरोजगार ही रहूंगा ना भाई। भाई कौन पढ़ता है पैसा कमाता है भाई? इकोलस ए ये सवाल है आपका फेस के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या पता भाई। चलो भाई वेंजर के साथ बैठ के थोड़ा वॉच पार्टी में। The team that's going to be heading into the losers finals momentarily, looking for that world title still. Yeah, we're taking a look here in game 1 now. हेलो, Esports आवाज आ रहा gonna है? wipe the whole squad. अरे इको कहाँ चला गया था? अरे लाइट चला गया था और लाइट के साथ नेट भी चला गया भाई। नेट आया ही नहीं भाई आधे घंटे तक। इसके साथ तो भी चला गया। हाँ भाई दोनों चला गया साथ में भाई। वेंजर पूरी कहानी बताओ कौन सी वाली? अभी ट्रेलर बता रहा है, हिंट दे रहा है बस। That's a big difference here, but of course NAMS Esports are Tweets just मेरी scamper all और the way in and इधर get those पॉकेटिवर ducats मैं 'cause हूँ, it's double वेंजर time. मैं हूँ। 2 minutes, you get double the points. Now it's esports, just such an incredible team, and you know they had a rocky start here in this tournament, but interestingly enough, they've had this आज before. Dupes, एक मैच तो खेलो वैसे प्लीज। इसको तो कौन सी साइड में है? किसकी है? देखते भाई। अभी क्या? तो पता नहीं यार, दिल टूट जाएगा तुम्हारा भाई का टीट्स तक चक्कर पता चला तो। अभी किसका मैच है? अभी नाउंस वर्सेस किसका हाँ, मैच है? नाउन RNS। Kinda relentless. इम्पोर्टेंट मैच देखते है भाई। Unfortunately, भाई नाउंस वाले का कुछ बता नहीं सकते भाई, कुछ भी खिला सकते भाई ये लोग। वही तो बोल रहा था मैं। क्या पता नहीं क्या कर रहे, जीत रहे बस। हाँ। कोई तो मैटर करता है, जीत रहे हैं। जीत तो रहे भाई। And it looks like Eichlin is putting a lot of points on the board. Now's doing everything they can to defend. yeah, अभी they're टीट से gonna शायद have to ब्लैक हैंड्स फाइनल में आ गई। हाँ भाई ब्लैक हैंड्स वाले फाइनल में है। आ जाए ना तो मजा आ वेंजर को जाएगा। बोलो कि एक बंदे को मेरा मैंने फेस सही में देखना DM है। किया था हाँ टीट्स पे। ये करा लो। 25 seconds isn't a lot of अल्फा time. का फेस के लिए उसका इंस्टाग्राम पे बाकी जाओ। बताऊंगा क्या Goal zone, है। Pengu on the backside, and they need to get these points, and there's 12 अभी ये लोग right जाएंगे सही है टीट्स के भाई। चैट में Here we सारे। go. A few points just being reined in. मस्ती नहीं The बना। score right here. You see it. मस्ती नहीं कर in रहा। that top half. मस्ती नहीं करना, उससे कहता हूँ तो सीरियस वाला जाना है। Everything they can to put points on मस्ती the नहीं हो रहा, board. मस्ती Rob नहीं। needs to put a point in, and as you see, मजा आ गया guys, मजा आ with गया। 10 points. Adesu in the top half with 100 points, eking out an incredible victory मस्ती नहीं। after losing that Zapdos. Yeah, I mean it came down to नाउन a वाले का razor-thin टकला margin. ओपी है, I was उसको standing टूर्नामेंट behind में से these two किडनैप teams as कर they लो। were playing. The अभी Nouns वो तुम्हें Esports किडनैप pop-off कर was लेगा। huge, and I could literally feel the souls getting sucked out of Eichlin इंग्लिश में बात off that करेंगे loss. टीट Now, से, of फिर course, पता after चलेगा that, इंग्लिश no टूटी फूटी। show and eternity went अरे at it. क्या These are the two देखो, top प्यार की कोई teams परिभाषा नहीं है, from तो प्यार की Korea नहीं। going forward in this tournament. Eternity, famously the team that mean green वो language में नहीं June, होता। looking for that world title. No show though, never one to give up an opportunity to win, as they are just putting the pressure on Tweets की? Eternity in unique 21 की है ना ways. tweets तो? Could do there for Eternity's Wigglytuff, of किसी को course, tweets but की they're age just पता है? getting the pressure put on for supremacy here in Korea. By the way, S4L just playing out of their किसी को पता है टीट्स के? I मेरे को feel बताओ। like they were always on top of everything for their team. माफ किए छोड़ो, आपका फेस अल्फा का दिखा दो। भाई बोला था उसने अल्फा के लिए इधर इंस्टाग्राम पे चले जाओ उसके। वेंजर
अभी मुझे लगता है मैं जा रहा अल्फा के पास। आप तो अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं। हाँ भाई ये कुछ भी लिख रहा है। 21 है बड़े भाई, क्या भाई मालूम है। ये कैरेक्टरों पे नहीं लग रहा तुमको? किस दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाओगे तो डे 1 में देख लूंगा। हाँ भाई सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलेगा भाई तुमको मेरा फेस, सीधा खेलते हुए भाई लाइन में। भाई मैं जीतता ना लंदन जाता तो चुरा के ले आता, उठा के डोली में उठा के ले आएंगे। भाई आपकी मम्मी को चक्कर पता चला तो क्या होगा? मम्मी बोली कि बहू ऐसे तुलाता जो हिंदी बात करे। दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। Finals. Before that, we are going to take a short break. We will be right back, and it's going to be our two faces again. भाई कितना ब्रेक ले गए? अभी तक तो ब्रेक ही चल रहा था इनका। मैं खुद वही सोच रहा भाई। और 3 मिनट का ब्रेक लगा दिया इन्होंने। अब वेंजर जितना भी हो तेरे से छोटी है, मेरे को पता है मेरे से छोटी है, 1 साल छोटी है मेरे से। पता नहीं कितनी छोटी है लेकिन है छोटी थोड़ी। Your team is world's best team. Yeah, Abhishek bro, thank you so much. छोटी चलती है, बड़ी भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। सब चलता है। भाई ये मोटू कितना कूल लग रहा है रे। आए हाय, ये IX गेमिंग का वेंजर भाई पर्क वाली लड़की पटी है अभी अभी। अरे तुम लोग को याद है वो पर्क वाली बात? इको को बोलो ना फेस रिवील करे। इको तू फेस रिवील कर रहा? नहीं भाई अभी नहीं कर रहा भाई। मेरे को करेगा? मेरे को तो दिखावे। भाई अभी नहीं होगा भाई। मेरे को भी नहीं करेगा। 1000 सब्स के बाद देखेगा भाई क्या करने का उसको। 1000 सब्स कर दो फिर इको के भाई। 1000 सब्स इको के कर दोगे वो फेस रिवील कर देगा। और अल्फा का तो मैंने देख लिया है। और शोगन का फेस रिवील तो 100 के पे है। 100 के करो, शोगन का फेस रिवील दूंगा। शोगन कर सकता ना? कहाँ के शोगन है? कॉल आया उसका। कॉल आया माइक बंद है। इको का पिक है मेरे पास। अल्फा इको तेरा पिक है अल्फा के पास। कुछ भी कर ले मतलब नहीं है वो। गारंटी लगा ले। मैं अल्फा मेरे को भेज जरा इसका पिक। मेरे को भेज जरा डिस्कॉर्ड पे। अबे 1 मिनट में चालू हो रहा मैच। भाई हेडफोन्स खरीदो, पैसा इकट्ठे ब्रो। एक मैच के बाद 30 मिनट ब्रेक कौन लेता है जबकि मैच सिर्फ 10 मिनट का होता है? भाई ये पोकेमॉन यूनिट वाले है भाई, वो सब कुछ कर दे भाई। अबे स्पॉन्सर्ड का पैसा कैसे निकलेगा भाई? समझ नहीं रहा। उनको टाइम भी तो करना है। भाई आपकी टीम सबसे अच्छी और हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच मेरे भाई। लड़की के चक्कर में मत पड़ो। नहीं पड़े यार, किल तो मार सकते हैं। अरे यार मेरे को एक्साइटमेंट में यार इन लोग इतना वेट करवा रहे हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं वेट। अभी तो और ब्लैक एंड वर्सेस जो जीतेगा उनका मैच देखने में मजा आएगा रे। फाइनल सीधा कौन उठा के ले जाएगा यार ट्रॉफी वर्ल्ड चैंपियनशिप का? देखेगा भाई कौन ले जाएगा ये पिकाचू का गोल्डन वाला ट्रॉफी। जो भी हो तीनों में से एक ही टीम तो है, कोई ना कोई तीनों में से एक है। Welcome to the polite league. ईगो कसम खाओ अगली बार अपन होंगे। अबे ये 1 मिनट बाद फिर गया बे ये। अब ये और 5 मिनट चलेगा भाई। I am an expert in British. ये चाय है भाई, मैं नहीं पीता चाय। ये चाय है लवर्स के लिए ये सब। हाँ अगले बार अपन चलेंगे ठीक है? ईगो कसम खाओ भाई, वादा है भाई। फुल ग्राइंड करेगा, फुल ग्राइंड रहेगा। अब हमारे पास में बेस्ट डिफेंडर सब हैं। मैं जंगल खेलेगा और इको इस बार
जंगलर And for those of you टॉप who लेन don't कौन know करेगा what is mashes, टॉप लेन it's sausages क्या and पता कौन mashed करेगा, potato. तू करे ना। So it's important Practice that you करना know तू how टॉप to लेन का। handle yourself ठीक है in फिर टॉप formal लेन and गाइड करता हूँ। informal settings, बॉटम लेन कौन है? following the specific etiquette of कोई choice. सक्षम का तो करेगा। नक्षत्र ठीक नहीं लग रहा मेरे को। Knowledge is अरे ये power. शोगन भी Okay, खेलेगा ना? gentlemen, we're going to be talking about how शोगन to खेलेगा क्या? handle something अबे valuable. ये बैठा So I have some अपना white भाई gloves and we're going to क्राउली ये pop them बैठा on. So I have इंडिया की something टीम very, से। very अरे वाह रे special भाई। to share with you today. अरे ये ट्रॉफी उठाने के बताते भाई, वो क्राउली देख कैसा उठा था, ये कल ही दिखाया था ये वाला को। And you may open अच्छा। your eyes. हाँ अच्छा सबने उठा दिया ट्रॉफी। हाँ So you देख देख probably recognize बताएगा it. अभी। I have the actual Pokémon trophy here, and I am going to teach you how to hold it carefully and in the correct ये etiquette. देखो भाई Now, if and when ट्रॉफी you उठा win कैसे this, फोटो they're लेते going ये to बता most रही likely देखो। want to take your photo. So you're going to want to spin it सिखा रही है around उनको। हाँ so that they can वो तो see हमारे the लिए है ही world नहीं, championships बोलना on your हमको क्या front जरूरत है इसकी। and hold it just रहने slightly दो। closer to your body. Also rest your hand on the top rather than holding on the upright section. There you go. क्राउली को देखना भाई। बोलेंगे चलो यहाँ तो सीख ही नहीं रहे, बोलेंगे चलो उठा ही नहीं रहे, फोटो तो खिंचाई Our गई, final section मिले ना मिले today छू in तो our दी थी, etiquette है ना? lesson is how to eat food in a formal British setting. You'll each be presented with a type of food, and one by one, I will go down the line, and you can guess and demonstrate how to eat. लग गया रे उसको food बेचारे को। How do we- केला भी Okay. चाकू छुरी से खाना सिखाते हैं भाई ये लोग। Try the spoon. So the spoon is incorrect. Peel apart the bottom. केला of the हमारे banana. इधर तो ऐसा छील के खाते भाई। Yeah. And try and get the whole of the bottom off. You can practice with the next one if you need to. We might need another cupcake. And then you're going to place the bottom section on the top Abhi? section to create a sandwich. Wow, that's very interesting. We have ये तो खाना वाना सिखा रहा है बे भाई। What do we think? Hands, knife and fork. or कपकेक spoon? खाना सिखा रहा है भाई। It must be a trap, right? But There's no traps in formal British stuff. I mean, it must be the hands, or am I cutting it? We are not using our hands today. Okay, okay. Got to be quite firm with these knives because the chef has forgotten to sharpen them. Okay, and now we have the banana. If you were served a banana in front of the Queen, Sausage, how would you eat it? hot dog, Okay, show me how. Is this actually the way? Yes, this is actually the way. So you want to cut it open on the side. And now what do we do? Leave the banana in the skin. Oh. Leave the banana in the skin. Good. No way. And now? Yep. अबे Fantastic. कौन ऐसे खाता है? मैं होता मैं सिखा रहा तेरे को देख। Thank you, gentlemen. I Something- am I was delighted a man, to say can I have teach all you passed the etiquette training how today. to eat? I hope these techniques will come Or in you handy can next time you find can yourself teach me in a how formal to British setting, suck. or indeed have the pleasure of meeting the Queen. ये खाना खाते हो, eat also. Oh, Welcome back to the Pokemon Okay. Unite Championship Series World Championships here in London. I'm Spurs, your resident content cowboy here. ये वाला बात। Joined by Doob Snacks. Hello, Doob Snacks. Hello, hello. We have some amazing action coming up. The losers finals here deciding हाँ चलो who is going to be अब facing चालू off होने वाला है। against वेंजर को बोलो Black अल्फा का। Hand अरे in वेंजर ने देख लिया रे Before अल्फा that, का we are बस। going to continue to क्या देखना recap था? a little bit of what has happened here ये फिर today. से घूम फिर के इधर ही आएगा Team देख। versus अबे Renaissance. यार। Put a pin in that one. वो फिर because वहाँ we've heard पहुँचे ना you तो मेरा at home. माथा गर्म We हो know you जाएगा। want to see a lot of these games, and फिर you're से going to फिर be से seeing खेले के पास ही footage of आएंगे। that game घूम फिर के very लोग। soon. Let's talk about Black Hand and IX Gaming. Black Hand and IX Gaming, two NA Break teams वाली that were empty। looking to square up for some revenge. IX Gaming falling to Black चलो भाई Hand, ये of course, final in the होने वाला regional boys। finals, trying to push through them through the rest of the tournament, but they fall just short. And yeah, the real question is between these two teams, I mean, could IX react to what happened in those finals from NA, or is Black Hand still the dominant team from North America? And Black today, Hand it की was जगह Black Hand. Yeah, it's pretty much लग been रहा Black है। Hand all day, Okay. right? No matter who they're facing, they're looking pretty good. Of course, the book working through Dragonite, they're trying to find their I can mark. read your mind Overlord on language. Serena was absolutely heating up as well. नाम IX Gaming, देख। though, taking the scoreboard आज वो lead खुद ही here. स्पेलिंग ऐसा करके रखे। IX Gaming looking really strong in a lot of these games, but I mean, when you've got a level 14 Overlord on the enemy team taking you up हिंदी in और the air, डायन तो you're हड़की in भाई such a समझ रहे हो dangerous हमारे। place. IX Gaming, great showing yesterday in their group. Just a powerful
powerful showdown, आपके winning their पाव लागू प्लीज भाई। शोगन से बात करा दो रे बोलो ना ब्रो मैच कब शुरू होगा? And IX Gaming really अभी हो तो showing जाएगा up, रे, एक दो showing मिनट में। out and showing that you shouldn't have underestimated this squad if you didn't pick them in your bracket. Without सबसे अच्छी question, टीम so वेंचर many भाई। अल्फा amazing प्लीज players पोस्ट here. Nudo, डालो Retsu, फेस की। Pikadev. I mean, अरे it's बोला just तो रे, so इंस्टा पे जाके amazing. देख लो भाई, 2-3 देख तो मिनट लिया, देंगे क्या पोस्ट फिर डाला फिर उसने। टाइम पास But it वाली was लड़की tough for आएगी them to take down खाना खाना Black केला Hand. काटना Black Hand, सिखाएगी the team that has taken down बस every हुआ single भाई। competitor they've gone up against. Without a doubt, we got a shout out Kratos, of course, OG, one of the best top path players in the ये world सजा as नहीं well. कर रहे स्टेज को, ये Unfortunately, शायद होगा, their सजा रहे run शायद falls short to क्या? Black Hand here स्टेज on the को। main stage. That's right. Black Hand taking them बोल रहा हूँ down. स्टेज को After that, we सजा had रहे होंगे अभी। IX हाँ Gaming लग रहा versus हाँ भाई Nouns टॉप 3 के राय क्यों Esports. So right after सही कहा Black तुमने। Hand, they've got to deal with Nouns. You got to deal with the NA champion. Then स्टेज you got सजा to रहे deal with होंगे। the EU आज पूरा champion. देख कर I जाऊंगा, mean, दोपहर they से have their स्ट्रीम work cut out for चल them, रही Nouns है। Esports. Yeah, absolutely. And Nouns भाई Esports चल has तो दोपहर से रहती है, अभी truly थोड़ा found the pace that थोड़ा they देर want to be पहले बंद moving हुआ at. था रे स्ट्रीम, अरे! लाइट चला गया था They मेरा। go very, very deep all the way to the grand finals, and IX Gaming was caught on the bad end of that. Yeah, I mean, there's no question, Dukes next, anyone you run into here at the World Championships is going to be a tough team to beat. There's a reason that चेक they आउट कर waded सकते हो through all of बाय द वे those शुक्रिया यार competitors डबल to make गेमिंग this happen and make it here to London. Again, भाई showing एजी के signs of स्किन brilliance स्पॉन here to कर Kratos. I mean, their hyper beams have been good. They've been really कर दे leveraging भाई that. It was a मजा huge आएगा success. Unfortunately, this Mr. Mime शुक्रिया Trevor भाई combo from Nouns शुक्रिया Esports really delivered in लव containing यू this भाई arena. Beautiful work here. Nouns Esports with an incredible defense. That Mr. Mime Unite move stopping everybody from scoring right here. Such an incredibly close game, but ऐसे Nouns करने Esports अंदर able to take it down and send शुक्रिया IX back to the States. Yeah, Bruv coming through with कब that खत्म होगा? Showtime spirit अभी तो that 2 goes मैच the बचा curtain है, is called मतलब on IX Gaming. Taking a look here. After that, we had T2. अभी देखो यार T2 वर्सेस भाई मैं नाउन्स आपके है, साथ उसमें खेलना से जो चाहता हूँ जीतेगा वो जो फाइनलिस्ट है उनके साथ, मतलब जो ब्लैक हैंड है उनके साथ होगा, वो फाइनल मैच होगा। Yeah, and this is बोलो ना another प्लीज great बड़ा भाई वाला। चालू कर दे वो ब्रेक वाली लड़की अब आई ना मूड तोड़ दूंगा उसका T2 really हो गया भाई leveraged देख the लिया strength of टूर्नामेंट देखने का मेरे को Yeah, we've been अभी talking आने so वाली वेंजर को much बोलो about it. मुझे I know it takes a whole दिखाए team. अल्फा It का फेस absolutely बाय does. फेस There's so वेंजर फेस में कैम कोरियन इंस्टा। हार्ट अरे तुम बनाओ एक उसका बार अल्फा के डिस्क्रिप्शन में ये? जाओ, वहाँ पे तुमको उसका इंस्टा का आईडी मिलेगा, वहाँ से देख लो यार, क्या प्रॉब्लम है। Absolutely. This is It's a a good- unique change here by Blossom, who we've just been praising their Snorlax तो pay. इसका मतलब भी नहीं पता, मेरे को छोटे बच्चे ने बताया था। But in this matchup, अरे। they went with the ऐसे tree, करना। and मैंने they ये क्या है, followed ये short. ये क्या है That बोलते tree was a nod to हार्ट Mame, मैंने their हार्ट strength on कहाँ Serena, and they said, I अरे need to switch it up. अरे बाय द वे शुक्रिया अगेन फॉर 100 रुपीस सुपर चैट भाई कुछ दिन मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ अल्फा भी भाई कुछ 18 दिन प्लस है मैं क्या? स्पॉन्सर कर रहा हूँ हाँ भाई ओके वो भी ब्रो, 18 प्लस ठीक है ठीक है है, ठीक हाँ है 18 प्लस है। एजी या तो कोई जो करना हो भाई जिसकी करना हो, एजी की भी कूल है और उसकी भी कूल है, क्या कहते हैं एजी और इसकी माचम की मेरी सस्ता में है, डिस्काउंट में चल रहा अभी 50% में। भाई भी शुक्रिया 100 रुपीस की सुपर चैट के लिए। अरे तू उसका ही ले लेता 4000 का, मैचम का ही लेना है क्या तुझे? 4000 का क्या करूंगा रे? अच्छा वो यूज वाला करना क्या कर रही है? 4000 में चलाती नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं है 4000 की मैचम कब से चलाने लग गया तू? मेरा माचम में अबे तेरे को माचम डैमेज दिखाऊं मैं अपना, दिखा। मेरा माचम का गेम प्ले तू देखेगा ना, देख क्या हुआ था मेरे गेम प्ले में। मैं ऊपर था ठीक है, तो इन्होंने बॉटम लेन का ड्रैगन वो ले लिया, मैं बॉटम लेन गया ही नहीं ठीक है, तो इन्होंने ले लिया। आप इंस्टा पे एक्टिव हो, आईडी बता दो। बिल्कुल सेम मैं भी भाई पर्सनल अकाउंट है अभी मैं तो, क्या करा अभी तुरंत फिलहाल तो नहीं अपोनेंट के कर जंगल में रहा, घुस तो गया, ज्यादा यूज नहीं करता। वहां उसका पूरा जंगल खाया, लेवल 9 हो गया, ऊपर करा पूरा गोल्ड डाला, रोटम में सबको यूनाइट मारा, वहां पर घुसा दिया 3 की स्ट्रीक 4 की आई थिंक 4 की स्ट्रीक मारी और घुसा दिया रोटम। वाह लेवल मेंटेन मेरा लेवल मेंटेन। साला सब सीख गया तू 1 महीने में। अभी कह सकता है कुछ दिन में मैं बहुत सिंसियर हो गया गेम में, मतलब मेरा गेम प्ले थोड़ा चेंज हो गया। तू तो क्या कहता है कुछ दिन से तू मेरा गेम प्ले देख रहा ना, अच्छी टीम्स के साथ खेल रहा है मैं अभी, सारी अच्छी टीम्स के साथ खेलता हूँ, प्रो टीम के साथ, तो मेरे को भी एक्सपीरियंस आ गया। T2 घंटे जीतेगा, लेट्स सी। Script was indeed flipped now. अबे T2 है ही नहीं शायद। T2 अरे है कहाँ? आरएनएस वर्सेस नाउन्स है ना,
amazing games that you and I were able to watch. खुद की तारीफ या हम कर लेते हैं खुद की तारीफ, हम शर्माते नहीं हैं, ठीक है, हम अच्छे हैं खुद की तारीफ, हम बिल्कुल नहीं शर्माते गाइस, हम खुद की तारीफ करते हैं। Fanning out over Mame, maybe those hearts were beating the fastest. Just such an incredible series here. T2. अबे यार ये ब्रेक ले रहे हैं, हमें ब्रेक दे रहे हैं, हार्ड ब्रेक। With the answer for T2. The interesting thing is they got to play them early. इसको ब्रेक बोलते हैं क्या? Figure it out. And then as तो they गया वो started लोग। to play them in this अरे आएंगे भाई मेरे को चक्कर। going home, but they figured रुक जा, मैं तेरे को माचम का डैमेज दिखाता मेरा। with this oppressive team. Slow bro fans unite. Geese coming up big, getting some good KOs. That's called slowing down Mame, reducing their मेरा आज का नेट खत्म हो जाएगा, देखते हैं कहाँ तक देख पाऊंगा। अरे ब्रो आज मैं वापस मूड में आ गया, आज तो क्या बात, शुक्रिया एडेबल गेमिंग सुपर चैट ब्रो। तो फिर शुरू हो जा भाई, दादा हो जा, यूपीआई कर दे भाई, यूपीआई कर दे, मजा आ जा। अल्फा को देख लिया, शुक्रिया ब्रो, लव यू यार। शुरू खत्म हो गई, अब आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखूंगा फिर। हाँ भाई हेडफोन आ जाएगा मेरा। इनको देख शोवन मैंने भेजा है। क्या क्या? शोवन डैमेज देख शोवन, माचम अब इतना गंदा किसको मारा है तूने? उन्हीं टीम को देख, कैरी करा था पूरा कैरी था मेरी टीम को। लिसी को मारा, ड्रैगनेट को मारा, किसको नहीं छोड़ा। अरे अगेन शुक्रिया ब्रो फॉर 100 रुपीस सुपर चैट। ओके अरे डेविल गेमिंग तेरी मैं वीडियो भी देखूंगा आज, ठीक है? डेविल गेमिंग की वीडियो। अल्फा वर्ल्ड कप में गया है क्या? नहीं रे वर्ल्ड कप में कहाँ से जाएगा भाई अल्फा। ब्रो उन लोगों को बोलो कि स्पॉन्सर का पैसे मैं दे दूंगा, मैच चालू कर दो। हाँ भाई नहीं भाई मेरे को सच में दिल से खुशी है यार, ये मेरा चैट का सबसे टॉप सपोर्टर है, तो मैं इसका नाम भी मेंशन कर दूंगा भाई। interrogations for us later to make sure we can find where Curios is for that grand larceny that they had in game 1 to even make this thing possible here. But Blackhand overlord on that Greninja, we saw a little bit of that yesterday and they're trying to use that to take over the game, but Renaissance switched it up. चैट में मेंशन है भाई, चैट ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया मैंने। कब देखोगे? मैं देखूंगा जब स्पॉन्सर, जिस दिन स्पॉन्सर हो किस दिन देखता हूँ, ठीक है? Game 2 a lot closer than Game 1. Game 1 it felt like Renaissance had यार मैं मैच के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ। सुपर चैट नहीं होता क्या भाई? मेरा चैनल मोनेटाइज होने का है तो सुपर चैट नहीं होता। पता मैं कैसा कर रहा हूँ, कैसा पीला है मैंने माचम से। मतलब तू मेरा ग्रेनिंजा से देख ले, इतना डैमेज कैसे किया तूने? ऑफ कोर्स मार के मैं जब चलता 1 लाख मुश्किल से आता था मुझे। अभी मारता हूँ मैं, घुस के उसके फाड़ता हूँ। अच्छा सपोर्ट बस मिलता बस, ऐसी की तैसी घुस जाओ। ऑप्शन नहीं दिख रहा। अरे मोनेटाइज होने का है चैनल, खतरनाक चल जाता है एप्सोल। और यही मैंने जैसे कि बताया ग्रेनिंजा सेंट्रेस से भी 1 लाख इजी क्रॉस करता हूँ, 1,20,000 1,30,000। अच्छा ग्रेड से कब से मतलब कब खेलेगा ऐसे? नहीं ग्रीडेंट नहीं चलाता भाई। ग्रीडेंट क्यों? अबे नेक्स्ट मेटा तो वही होगा ना, ग्रेडेंट ही होगा नेक्स्ट मेटा। पता नहीं मेरे से नहीं होता भाई ग्रेडेंट, मतलब मेरे से नहीं चलता ना, मेरा कीबोर्ड से नहीं चलता। समझ रहा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता मैं। स्टार्ट करवा दो भाई। अरे भाई हो जाए यार, काश। मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस जीतने पे ये लड़के के हाथ से चाय पिला दो मेरे को उसी के साथ, वो काश भाई। ये भी सही है भाई। हाँ भाई हाउ मच मनी यू हैव? इसकी जरा भी अच्छा। अरे मैं आता थोड़ी देर में खाना खा के, ठीक है? देखो तुम। हाँ ठीक है। अबे 10 मिनट के भाई, ये पागल है भाई, ये पागल है भाई। मैं ग्रेनिंजा गॉड हूँ, एम्बलम सेट कर लिया। अरे क्या बात है। हेलो भाई ड्रैगन भाई, खाना खा के लाइव स्ट्रीम तो लगातार चल रहा है।
एक दिन डेविल तेरे को हाँ भाई याद है? तुम देखो भाई पता है स्ट्रीम यही, मैं आता मैं भाई तब तक चैट खाना में खा के bro, कर लो भाई हमारा supporter। रखो भाई यूनाइट भाई भाई, मिलते भाई ये थोड़ा Ninja देर लिया था, आता भाई तुम मैं सब एंजॉय गेम करो भाई करता था, ये स्ट्रीम मेरा अपोजिट में था। तब तक खाना खा के आया मैं ठीक ये मेरे से है भाग रहा था शोगन, पता है पूरे मैच में इतना मारा मैंने, इतना मारा। मैं शायद वो सिंडी ग्रेनिंजा खेल रहा था क्या वो ग्रेनिंजा खेल रहा था। इतना मारा मैंने तेरे को डेविल उस दिन। अबे मतलब मैं मार भी नहीं रहा था, ये भाग रहा था। मैं भी ग्रेनिंजा ही था और शायद। वेंचर अब तो डांस बनता है। नहीं भाई डांस अभी नहीं होगा। विनिंग किसी को विन होने तो मजे करेंगे, ठीक है विन होने दो किसी को फिर थोड़ा। हाँ ब्रो याद है एम्बलम माचेम आता इसलिए। अच्छा ओ उस दिन माचेम का एम्बलम लगाया था तुमने। अच्छा गलत थी माचेम, एम्बलम गलत थे। What font do you use for Pokemon Unite? सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। Note 5 Pro। हाँ यार वही तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे साले। Pokemon भाई आई एम द ओनली वन हु प्लेस Pokemon। मैंने माचेम का स्किन खरीदा था इसलिए प्रैक्टिस। अरे नाइस रे, नाइस रे। गार्चम को बफ मिला कि नहीं उसको बेचारे को? गार्चम को बफ मिला कि नहीं उसको? किसको? माचेम को? गार्चम 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 तो खत्म है भाई, जिंदगी खत्म। उसकी कोई काम का नहीं है वो। उसको टूर्नामेंट, लेकिन वो टूर्नामेंट से बैन है रे शोगुन। क्या सच में? गार्चम टूर्नामेंट से बैन है। क्यों? अभी इस वाले नहीं, लेकिन गार्चम को बग रहते हैं उसके पता नहीं क्या बग की वजह से बैन रहता, मेरे को नहीं पता। बैन रहता वो पोकेमोन। मैं सोचा ये कब से इतना ओपी हो गया, बैन करना पड़ा इसे। पता नहीं, नहीं रे नहीं चलता वो ज्यादा था। उसको सिंड्रेस जैसा पोकेमोन इजीली मार देता है, समझ रहा? भाई मैंने डिस्काउंट में नैंडबिल का स्किन खरीदा। अरे डेविड मेरा भी तो डिस्काउंट चल रहा है माचम का, पर मैं ले नहीं पा रहा। माचम और एजी का मन है मेरा लेने का। माचम पे एजी में से लूंगा, देखता हूँ। विन होने के बाद गेम खेलोगे या नहीं? खेलेंगे, देखते हैं अभी। गेमिंग के लिए क्या अच्छा है और कौन सा ब्रांड? ब्रो आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। ब्रेक कब खत्म होगा? अभी 6 मिनट बाद। गेम एजिस लाइफ लो। मैं थोड़ा ना खेल रहा, अभी ये लोग खेल रहे हैं। मेरे को इनवाइट कर देना आज प्लीज। आज अगर आऊंगा तो करूंगा इनवाइट। प्रोबेबली आज विनर को देखना है, तो आज तो गेम नहीं खेलूंगा, गेम देखेंगे। अब दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स को आज देख रहे हो तो देखो ना, मजे करो ना। आज खाली मैच देखो और सीखो बॉयज, सीखो कि दुनिया की बेस्ट टीम्स कौन से पोकेमॉन लेकर ये टूर्नामेंट जीत रही है। समझ रहे? मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर्स कौन से पोकेमॉन, मतलब प्लेयर्स बेस्ट, मतलब पोकेमॉन में हमने बेस्ट लिए है। चैंपियन पोकेमॉन होंगे जो भी होंगे। क्यों इतना ब्रो ये लोग क्या? हाँ मैं भी कल भी देख रहा था। अच्छा वेंचर ब्रो जब तक पनवेल जाके आते हैं चलो। हाँ बे मेरे को कसम लग रहा, जब तक मेरे को पनवेल जाना है, मेरे को लग रहा है जब तक मैं पोकेमॉन यूनाइट खोल लूं। नेक्स्ट वर्ल्ड कब हो रहा है? क्या नेक्स्ट वर्ल्ड कब हो रहा है? नेक्स्ट वर्ल्ड्स हाँ अगले साल होगा ना। अभी तो अगले साल ही होगा क्या? मतलब शुरुआत होगा? अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट, महंगा टूर्नामेंट है, अगले साल ही होगा ना। हो सकता है। वेंचर कल तो 2 सेकंड में जैप मेल्ट कर दिया था। किसने? टकला को गोल्ड कार्ड मिला। हाँ यार ड्रैगनाइट को गोल्ड कार्ड दिया। इंडिया टीम पर टॉप 8 में ना जा पाई साइड लाइफ। क्या मैं टॉप 8 में था बड़े भाई?
मेरे भाई मेरी टीम टॉप 8 में थी। भाई ब्रो कभी स्नोरलैक्स लेके खेलो ना, मैं स्नोरलैक्स में अच्छा हूँ। तेरा फर्स्ट डिफेंडर होगा ना वो स्नोरलैक्स वाला? हाँ तेरा फर्स्ट डिफेंडर होगा जो तूने खरीदा है। हाँ हाँ सही कहा सही कहा। मेरे से आता है स्नोरलैक्स, मेरे से अच्छा आता है। अल्फा भी अच्छा खेलता है स्नोरलैक्स, वो ही हमारी टीम का स्नोरलैक्स है डिफेंडर। अच्छा अबे अच्छा चला रहा है। ये अल्फा वाइटी दोनों है ना अभी शायद? नहीं ये अल्फा नहीं है, वो वाला अल्फा तो टॉप लेनर है, वो तो वो खेलता है बस साथ में। अच्छा वो टीम का मेंबर नहीं है। मतलब मैं ऐसे काफी लोगों के साथ खेलता हूँ, नई नई स्क्वाड्स के साथ, मतलब अच्छा लगता है भाई सबके साथ खेलना। नए नए लोगों के साथ खेलो, कुछ सीखते हो, अच्छी टीम सामने आती है। मतलब इसीलिए तो मेरा देखना कितना कॉमन सेंस बढ़ रहा है गेम का, गेम सेंस बहुत बढ़ चुकी है क्योंकि अच्छी टीम्स के साथ भी खेल रहा हूँ। और पता हूँ एक बात बताऊँ तेरे को, मैं जितने मैं जंगल करता हूँ ना अच्छा जाता है। मतलब मेरे को जंगलिंग का बहुत फायदा हो रहा है आजकल, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा लग रहा है जंगल करना। तूने वो ट्राई नहीं किया क्या बोलते हैं ग्लेशियन? करा है, मारा भी है अभी, देख मैं दिखा रहा। अभी ये टॉप प्लेयर को हराया था परसों ही, कल या परसों। अच्छा क्या ग्लेशियन से? हाँ टॉप ग्लोबल प्लेयर को हराया था ग्लेशियन से। हार दिया था, पेल दिया। जंगलर था मैं, जंगलर ग्लेशियन लिया था। मेरे से अच्छा ग्लेशियन लेकिन इको चलाता है, 1.5 लाख डैमेज। नाइस। क्या इको का? इको लेसा इको मेरे से अच्छा ग्लेशियन चलाता हूँ भाई। मुझे भी खेलना है ग्लेशियन, पसंद है मुझे। अबे वो मेल्ट कर दे, उसको कोई भाग नहीं सकता है। जैक वेटर में भागने चल पड़ डाल दो। हाँ वही देखा मैंने उसका सीन। Renaissance and T2 from Japan. You know, Renaissance Dubesnacks has just been one of the biggest treats throughout this entire tournament. चालू नहीं हुआ क्या? हो गया। ओ गाइस चालू हो चुका मैच। अरे बाप रे, exciting different strategies. मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि चालू हो गया ब्रो। Absolutely. We're talking about two different strategies right here. अर्लियर टुडे अबे नहीं हुआ बे, अर्लियर टुडे बता रहा। क्या वो? मुझे पता था ये। Rolling through here, going to try and get some buffs out from under Kamiru and keep them from leveling up. Is नहीं हुआ। to eject out? Well, I mean, it's some exciting plays right here. Whoa, moving on in. There वैसे we ये go. मैच किसने जीता है? Supercell with that little bit of an invasion here, and ये now मैच we ये have Ruin आज का running the Duraludon. You know, this is T2 a versus Pokemon that I RNS. feel like is being slept on quite T2 कहाँ hard जीती? inside Pokemon Unite. When अरे the मतलब Duraludon ये came जो भी out, दिखा रहा it है was इस टीम में। proved just massive, क्या पता यार। incredible. But I still think this Pokemon has such great utility. You can play it in Path, you can play it in Center, it can take down a Dreadnought, or it can take down a Cinderace. Yeah, the one thing that Duraludon's going to have to look forward to, or look out for, excuse me, is Kamiru coming through that Unite move and all its abilities just raining down on it, as it doesn't have the most maneuverability out of all the Pokemon in the game. That's right. Here we go. We've got the Psyshock coming in here in the bottom path. You know, I love also seeing Kamiru running the Psyshock build. Every tournament Gardevoir that I've ever seen coming up to this has been running Future Sight, but Psyshock has been getting better and better. Gardevoir got some recent buffs that made it better and better. So it's so cool seeing a team say, मच्छर you know, this Pokemon कैसा Pokemon is अच्छा है क्या वो? actually great right now, and everyone else doesn't know it. वही बजूर। यूज कर रहा। उस दिन मेरा नाम देखा तूने? किस दिन? टॉप प्लेयर्स में मेरा नाम बेस्ट बजबोल पे था। मतलब वो अच्छा है कि नहीं? कोई एक्सपेक्टेड में आया था मेरा नाम। मेरा नाम टॉप ट्रेनर्स में बजबोल में आया था। अबे नहीं, तू तो आएगा टॉप में, बट वो अच्छा है कि नहीं तू ये बजबोल ठीक है अच्छा है, खेले तो अच्छा है, उसके मूव साइड अच्छे हैं। क्योंकि वही सोच रहा हूँ, मेरे पास अभी उतने कॉइंस नहीं है, अभी तीनों से क्या ओबिलिटी नहीं है उतना, ध्यान से देखना। मैं सोच रहा हूँ यही ले लूँ, मतलब ग्लेशियन, उसके बाद ये ट्रेवनेंट लूँगा। ट्रेवनेंट बता रहा टीटा अभी गंदा। Renaissance here just picking up more experience. Rebongs on Guys, this arena. I mean, one of the players to watch. See We damage. talk about Gardevoir so much just because it's, you know, an unusual pick, but Rebongs is absolutely brutal, of course, on that क्या going कर ये तो मैं रहा आज है? मैच में ऑफलाइन हो गया था। हाँ क्या डैमेज दे रहा है तू आजकल? ऐसे ही खेल रहा है, मैं बस घुस जाता हूँ मारने पीटने।
Throwing some points up into this top path. And जब we've तक got पूर्ण चालू मैंने बोला कल पिंगू तेरी जॉब खाऊंगा खाली तेरे गंदे जाके पिंगू मैंने बोला तू सेंट्रेस शुरू कर दे बोलता मैं सेंट्रेस प्रैक्टिस करूंगा मैंने कहा अभी ग्राइंड कर रहा होगा सिंडी से always threatening, always ready to go. Big scores here, breaking that bottom path goal. You know, it's a decision that a lot of teams make. Are we going to break this? Are we going to leave it open and we continue to get all of this experience between it? Renaissance saying, no, we're just going to break it. You're going to have to walk a little bit farther if you're coming back for the next stretch. Mame never afraid to use their Unite move, catch some stomps and go in, and there they catch a receipt for that insolence. I mean, that really shows how amazing Kamiru is. Can a Gardevoir get away from a Zarina? Is that even possible? Well, it looks like it is when you're on Renaissance. That's without a doubt. T2 trying to hold it together. The Takashima goes down to Rebongs, NT, and Yang just pushing into their face. Here we go, moving on up to the top path. That was not on Moving purpose. on up It's to where the I got. top path. It's where I got. Here we are. Venusaur now deciding if they're going to stay here or head bottom, because both these goals are open. They're able to just continue to get experience, and then maybe gobble up a Duraludon while they're here. But what you saw there is they set up an ambush, right? They set up the portal. Yang feigned to go into the portal as the two other players for Renaissance hid in the grass. T2 pushed too far forward. They thought they were clear, and then they jump on him, unlocking Yang for a KO Shriga 3. Yang is just so incredible in all of these games. It's weird because I feel like Renaissance has so many bright lights. It's just hard to notice. It's I forgot about Rebongs. I forgot. I just forgot that Renaissance, every single member of it is so good and so impactful. What impresses me just looking at these two teams is the flexibility. I mean, I don't know of anybody that would have said, which Pokemon do you think are going to be the most played in some of the most winning teams? I don't think Gardevoir, even Venusaur, maybe, certainly not Duraludon or Wigglytuff would have popped up on those lists. No, absolutely not. This is one of the best things about all of these different regions coming together, is because inside of your region, you start to figure out what your region believes is the meta inside of Pokemon Unite. You can't play this, you can't play that. Gardevoir is better than Talonflame. You know, crazy things are said. But when you see these teams come together on the world stage, you see that there are a bunch of different ways to play Pokemon Unite. There are strategies that maybe it works really well in, let's say, NA, but is countered really hard by what APAC is bringing to the table. Absolutely. Renaissance, you know, whoa, okay, from way downtown getting sorted out. T2 here, of course, we know their strategy is to get behind Mame. Renaissance taking a different approach than like Nouns Esports. Nouns Esports went heavy defender, big bodies getting its way. Renaissance went high damage, explode this thing off the map and take care of it by chucking all your moves at it. Big Unite move there from the Duraludon, that little ring of fire. And Rebong saying, yeah, I guess I'll head out then. Yeah, you know, I'll just head out. Yeah, just like, I don't need to be in there, not right now. It doesn't look good because it's fire all over the place. True. Ruin truly just scorching the earth around themselves in Remote Stadium here as they're just slowly knifing through their wild Pokemon on their side of the map. Hey, and that Unite move's called Revolving Ruin. So there you go. Boom. Too easy. Haruta coming through, big time engage. Wide Guard has been such a powerful ability. We've seen it on, you know, like Overlord, for example, yesterday. Haruta all day today, and it just does so much work in tandem with Sacred Sword. Haruta looking gorgeous with that hollow air. It's been one of the things that I've just been obsessed with throughout this tournament. We've got a tuxedo mask looking Aegislash there. It's just too beautiful. And you know, another thing I've been obsessed with is Mame. I mean, come on. Every single match, Mame is just incredible. I think Miva's the only player not wearing Hollowware for Renaissance. Everyone else dappered up. I think you got to be dappered up. You know, I mean, I've got a bow tie. You're looking like a beautiful flower dream. This is the World Championships, baby. It's time to dapper up. It looked like I cut down my granny's curtains and made a suit, but that's all right. We'll hold that one down for later. Yang with one of my favorite Hollowares in the game. As, you know, NT just bubbling out the sword a little bit. Here we go. They're fighting over this final dread. Now it looks like they actually just pushed him back here. Renaissance able to take this. This is a play that I love to talk about because in my solo queue games, Dubsnacks, 4 of my teammates will throw themselves at this Dreadnought, use all their Unite moves. Please, we're on the world stage. You don't need to do this. I'm telling you, it doesn't have the value you think it does. Look at these top professional teams right here. One of them takes it. They know the big fight's happening in about 15 seconds. Everyone has their Unite move indicated by those pips except for the Zarina.
But they're going to get it here in short order. I can only imagine. They got a couple seconds. Here we go. Zapdos is going to be spawning here in just a couple seconds. Renaissance looking incredible in that game, and they do take it down 2-0. We are heading to a break because our losers finals is almost ready to go. We will be right back. Welcome back, everyone, to the Pokemon Unite World Championships. My name is Zoinks, and I am, of course, joined by the great Jeff Hoagland. Good to be here, Zoinks, and even better to be gearing up for this losers finals. The winner of this will go on to face Blackhand in our grand finals, where we will finally crown a Pokemon Unite World Champion for the first time ever. That's right. These players are on the stage, and they are playing for the biggest stakes that they have ever competed for. The first place prize, $100,000. $100,000. Let's take a look at one of our teams that's going to be competing here today. Renaissance versus Nouns Esports. Renaissance representation from the APAC region, and Nouns Esports hailing from here in Europe. Both of these teams have had incredible tournament runs so far. Renaissance has made their way through the winner's side of the bracket up until the winner's finals, only to be sent down by Blackhand, but that was the only game loss they took in the winner's bracket. They will be showing off against Nouns Esports. Yes, exactly. Yang, a player that you can see here. Camiro, two amazing players. A lot of people think that they may be the stars of Renaissance, and this team is packed full of them. Incredible caliber of players. Renaissance are coming for a world's title, and they look like they could take it. Renaissance really setting the mood of you can play Pokemon Unite the way in which you enjoy, with the characters that you've mastered and love, bringing some really unconventional strategies to the tournament today in Gardevoir and Absol. But let's take a look at their opposition here in this losers finals. Nouns Esports, coming from the EU region, and Nouns, they don't like to lose, Zoinks. They have won almost every tournament in the EU region. And where are we again? That's right, we are within their own region, London, England, here in the EU. A little bit of the hometown hero crowd here is Nouns. They have been playing a very impressive tournament as well. They did get dropped down into the losers bracket
first round in our top 8, but ever since then, they have been on a tear, taking down team after team to find themselves here in the losers finals. Losing the first round of our double elimination bracket means they have taken the absolutely longest path to get to where they are, but they are not looking to slow down now. They have won a lot of Pokemon Unite today to get to the position that they are in, and they are looking to win a little bit more now. The position they have achieved is nothing to scoff at. A top 3 finish at the first ever Pokemon Unite World Championships is some feat, but I know that Nouns Esports and Renaissance are going to be fighting for so much more. Nouns has that first place AOS Cup, first place regional finals. They would love to add first place and world champions to their list of achievements here in Pokemon Unite Esports. Nouns Esports has been looking incredible, but so has Renaissance. This team coming from the winners bracket very recently have looked incredibly formidable. A lot of threats on their team, and like we were mentioning, they bring something new to the table, namely a lot of ranged attackers, which we do not see in this meta very often. Yeah, the kind of story of the weekend is melee brawlers. Almost every team has been registering more than one of them, whether it's Zarina in tandem with Lucario or with a Machamp or even Trevenant in some cases we've seen on Nouns Esports. And Renaissance has kind of pushed away from these more traditional configurations of their teams, and they've been playing multiple range attackers that are special attackers. We've seen Gardevoir and Venusaur out of them, and even when they feel they need to pivot off of these special attackers, we've seen them move into other unconventional characters like Absol earlier in the day. That is very true. Both of these teams, honestly, I would give the credit to one of their best talents being flexibility in terms of in-game. Renaissance does have a few Pokemon that they like to go back to again and again, but we even have some players like Kamiru who can flex out of that Gardevoir pick and has even showcased a mighty Absol here at the Worlds Tournament. On the other hand, Nouns Esports, I think, are very well known for their flexibility. Last time we saw them on stream, they were playing a myriad of Pokemon. Yeah, this late stage in the tournament, losers finals, the dynamic of how you draft is very different than earlier. Both of these teams know the compositions that the other team has been drafting earlier in the tournament, and that could dictate how they want to play here in their first game. This is your losers finals, game 1, APAC versus EU, Renaissance versus Nouns Esports, and we have some interesting lock-ins already. Bruv has been on this mime, and they have it locked in. Yeah, we see Mr. Mime, arguably one of the most powerful range secures in the early game for Pokemon Unite. And we see Yang hovering a character here that we actually haven't seen them play it today, I don't think, in Alolan Ninetales. Alolan Ninetales with X attack. That is going to be a fearsome attacker with their moves, but also their auto attacks. Very, very strong within the path in the early game. They may get punished, though, by a little bit of the tanky Pokemon like Gatlu on the Greedent. That could be a big problem for them. Yeah, Alolan Ninetales, really powerful disruption from the range. The range attackers really seem to be what Renaissance is favoring when they're loading out their team compositions here. But one thing that's really nice about Ninetales is because of the suppression that it provides with its dazzling gleam stuns or potentially walls with avalanche, it's a selection that can help protect the Gardevoir that Renaissance is going to be looking to scale up in their central area. That's true. Both of these teams have so many threats in terms of superstar players, but one that has been really proving themselves today again and again has been a Desu. This player's Dragonite has been instrumental in this losers bracket run, and they are hoping that it does not stop here. Renaissance is going to need to find a way to shut down a Desu in these critical last hit on objective Pokemon moments. We've seen Nouns Esports execute this strategy before. The Hoopa is invading here in Renaissance Central area, trying to take those valuable buff Pokemon away from the little baby Gardevoir in its basic form. He's knowing that the Gardevoir is going to be moving into path early and then trying to stop them from doing so. They do nab that Corphish away from Kamiru and are going to keep getting some auto attacks in for damage. Yeah, we see range Pokemon है ना सारे. with the other Hoopa coming in, but look at the amount of time he's bought. Is it going to knock मैं दूंगा ना, मैं हूँ. अभी start हो गया मैच. In addition to the incredible amount of time it's अभी तो मैच खेल ही रहा हूँ. हमारा इंटेंस चल रहा है मैच इधर. अच्छा खेल रहे हो तुम लोग. मारेंगे रे ये लोग. But rebounds with a nice rotation is going to come and shut down Geese. End fight
निकाल लो। invade definitely paid off, but it is a 1-for-1 trade. फ्री गोल मत दो, बॉटम लेन नहीं छोड़ना मत इको बोल रहा हूँ। शोगन छोड़ना मत बॉटम लेन। अरे इनका मैच स्टार्ट हो गया रे। स्टार्ट हो गया, बस हम लोग को 2.5 मिनट बचे हैं, हम जाते हैं। Baby Gardevoir is heading back to finish their first of the second buffs now that everyone has finally left their central area. Gatlu charging into this goal zone has been इसी तरह यूनाइट चार्ज करने का क्या ले ये ले। रिलेशन में लेवल कितना है? 12 है। ज़्यादा कुछ नहीं। मैच में 350 है क्या? जल्दी आ। डिस्ट्रैक्शन के लिए अच्छा होगा। ये लोग ले रहे हैं इधर आ इधर। Given how far behind अरे they shit were यार। by that initial इधर आ इधर देख ये लोग ले रहे हैं टॉप लेन। उसका डायनामिक पंच खाना। Bruv has not been able to prevent them from leveling. इधर ही मारूंगा मैं इनको, इधर ही मारूंगा मैं इनको, इधर ही मारूंगा। Pokemon already at level 6. Bruv is getting leveled up very quickly down here. Yeah, Yang and almost Lisa, United. levels United. under Bruv here on the Mr. Mime, and there is showing the power of Mime and how it can contest those last hits early when in pack. गए 4 गए, तीरंदाज भी गया। ऐसा लेगा भाई, लेना शुरू कर। तीरंदाज को मार देना, तीरंदाज को बिना मारे मत आना। हम देखेंगे। आराम से लेना, टेंशन क्यों ले रहा है? घंटा भी नहीं आने वाला कोई इधर। ऐसा पेला भाई वहाँ पर यूनाइट मैंने इनको, ऐसा मारा यूनाइट। अरे तो मेरा नेट देखता भी, तो देख रिप्ले देख मेरा। Giving up the bees in the top path, acknowledging that their Zarina's a little bit too low to contest. Speaking of Zarinas, their Zarina's heading into the central area to try and hit that level 6 breakpoint now. That makes a lot of sense. Zarina desperately needs that level 7. They'll be able to get it with the Bouffalon and the Ludicolo buffs. Nouns has never met an objective they didn't want to immediately take off the board. As we see here, they move in on this Dreadnought, and Renaissance kind of being like, hey, we have no desire to contest this. They all rotate to the top path a little bit early here, but this gives a day score in addition to a कितना टारगेट दे रहा है माचन बाचन। तो गाली मारता रे बस। क्या ये? नाइस सुगो नाइस। बाहर ही नहीं निकल पाएगा वो। Oh, the hyper beam is आने दे बाहर आने दे। scoring iframe there. बाहर तो आने दे सुगन बाहर तो आने दे। अरे मैं ये हूँ। वे हुपा के पास यूनाइट है। अरे मैं क्या हो गया? नेटवर्क फेल। 3 players. Redmaw's got to go before all of the Pokemon come back at full life. Renaissance Hoopa playing an amazing defensive way. Gatlu launches out the Trevenant Unite move though. It's enough damage to knock out the Bouffalon. They're looking for more. Yang is the next target. They horn leech them back towards the central area, and they keep on auto-attacking. Yang needs to run, and Aura Veil's going to give them enough defense to escape. क्या मारा है भाई? A little bit of healing as well. There's nice way. to the point Gatlu biting off a ton मैं मैच स्टार्ट कर रहा हूँ जल्दी से। in the face of the suppression that dazzling gleam provides out of 19. अबे 6 में मेरा डैमेज 1,09,000 भाग। Catch up in terms of levels. Right now, Redmaw only 1 above. हट यार, at level 10. अबे नहीं मेरा 93। सुगन अब ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं आता तूने। इतने डैमेज में तेरे साथ। अब भाई तुम तो ज़्यादा करो। हमने पढ़ा तो देख करो। अभी भी भाई इतने दिन बाद खेल रहा तब भी देख रहा बंदे को। थैंक यू ब्रदर। इतने दिन बाद खेलेगा तब भी भाई खतरनाक है। शोगन ही है। शोगन को नर्फ चाहिए। नहीं भाई इतना भी नर्फ नहीं चाहिए मुझे। शोगन नर्फ नहीं होने वाला। अबे ये क्या चल रहा? अभी मैच चल रहा क्या? हाँ मैच चल रहा है। अरे मैं जीत नहीं। अबे कहाँ बे बस नहीं। अबे कहाँ है? अरे किसी ने बोला है 4 हो गया। मैच चल रहा है यार। बेकार भी इतना जल्दी इतना गंदा मारा दिल करते नहीं तो ऐसे ही। सॉरी मेरी स्ट्रीम पीछे सॉरी। अच्छा अबे आरने जीत रही है। अबे चल फाइनल 2 मिनट तो अभी बाकी लेकिन मजा आ गया। अभी मैच शुरू हुआ यही तो मेन रहता भाई। तो लेवल देख कौन खेल रहा है। अबे ट्रेवेनेंट खेल रहा है। ओके माइम अबे माइम भी खेल रहा है भाई। मैं 9 tails what the नाइस वे ये चीज
चीज नहीं है स्टन 9 टेल्स सेरेना वही है। अबे विनासोर को निकाल दिया। खुशी कितने हैं ये लोग? अबे क्या स्टील था भाई, क्या स्टील था। इसने ऊपर ने लिया ना। हाँ ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। वो सोच रहा होगा कोई है ही नहीं उधर। होगा कभी कभी। निकोलस का नेट पूरा भाई लोड हो रहा है मेरा गेम भाई, पता नहीं भाई लाइट गया तो उसको जैसे सीन होगा। इन दोनों को लेवल की जरूरत है अभी हर्टेन करने में। लास्ट मैच में था ऊपर 4 थे, रोटम के पास में 4 प्लेयर, मुंह पे मार दिया उनके यूनाइट, वो लोग वहीं खत्म। Second timers and the third and final dreadnought getting ready to spawn in 15 seconds. Nouns Esports definitely playing a little bit farther back and safer, whereas Renaissance was playing ahead in the map and well spread out to gather as much intel as they could about the map. Now they see Nouns Esports मजा आता है पता है इसे खेलने में। Renaissance has started to form up and collapse. Gardevoir caught a little bit in a forward position here, gets back out and around. अभी देखेंगे हुपा लेगा कि ड्रैगनाइट। भाई दोनों एक ही। हुपा मैं बोल रहा हूँ हुपा ले लिया। सेंटर सेंटर कौन लेगा पता नहीं। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनकी फाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी नाउन्स की सेंटर फाइट। देखेंगे भाई वो तो पहले ठीक है, फिर भी आरएनएस का भी देख लेते हैं। भाई ये डिसाइड कर देगा कौन जीतेगा। You want to force a team fight. You do not want to try and flip this objective. You do not have the securing power that दिक्कत दे सकता है 9 टेल्स को। भाई वो तो फंस ही गया ब्रो। लॉल आ गया बाहर। अबे ब्लिसी का पूरा काम है सेरेना के पीछे घूमना बस। ओके ट्रबलेंट घुस गया। अरे बाबा माइम क्या किया। अरे यूनाइट छोड़ दिया माइम ने। माइम गया बच गया। अरे गया खत्म भाई। ट्रबलेंट जिंदा। 2 बंदे खत्म हुए नियॉन्स के। अरे बाप रे। अबे 90 कवर द कैसे दे रहे हैं पोजीशन उसके। खत्म भाई। ये तो दिखने वाला था मैं। अरे इनके बंदे रिसेट हो गए रे भाई हुपा यार। खत्म भाई 3K और ले लिया भाई ड्रैगोनाइट। अबे क्या यार हुपा ये। अभी वो डिस्टेंस अभी जरीना 9 जिंदा है। जब तक सेरेना जिंदा 9 टेल जिंदा। 9 टेल भी खत्म है। अबे 9 टेल भी गई। खुशी है यार थोड़ा। 9 टेल हुपा भी भाई जैक से क्या नाउन भाई नाउन की सेंटर पे लिया इजी स्टेज। इंसेन पोर्टल ये क्या कर रहे हो भाई एनएसएनई वाले नाउन। डिफेंसिव बिल्ड है 9 टेल का, लग ही रहा था भाई। 29 soon to be 6 29 to 195. Nouns ऐसे तो नाउन को सपोर्ट कर रहा है ना नाउन जीतेगी ये। जीतेगा देखते रहे नाइन्स वाले क्या लाते हैं। अब इनको यही रखना था रे, क्या बोलते अपना विनासोर ही रखना था। हाँ अरे फिर भी अच्छा खेले सेंटर मैच। और पोर्टल ने बदल दिया ना। अरे उनके बंदे जल्दी रिसेट हो गया है पता है मरने के बाद। स्लो ब्रो की आंख में देख लगाए हैं सनग्लासेस पहना है उसने। अबे 9 टेल्स का स्ट्रेटजी काम है बट पोर्टल ने बदल दिया। हाँ सही कहा 9 टेल अच्छी चली। लगा नहीं 9 टेल करता होगा। जल्दी वोट करो, जिसने वोट नहीं किया होगा जल्दी वोट करो भाई। कौन जीतेगा भाई ये मैच, जल्दी से वोट दे दो भाई। क्या कर रहे हो भाई, सबको हरा रही है टीम ये।
the grand finals of a Pokemon Unite tournament. Yes, taking a look back at the stat lines for this game, an interesting story. A Desu गाड़ी वॉर के लिए क्यों मर रहे भाई? दूसरा ले लो. Superstar from Nouns, but they got a lot of those KOs all in that final fight. Listen, if you're gonna pick one spot to put all of your knockout swings, you might as well put it in the most important fight of the game. Looking at the damage number here is on both sides. अबे आरएनएस वाले लुका नहीं खेलते ना शायद? नहीं. Both of these teams do a pretty good job of picking their engages and avoiding. ये तो भाई विन वो हुपा ने बदल दिया. अरे आरएनएस वाले तो बस यही कॉम खेले रहे गार्डिवर के साथ. गार्डी विना और वो ही खेले थे. अच्छा. ये टकलू मेरे को लग रहा है ट्रॉफी न ले जाए ये टकलू. क्या बता भाई? लेके जा सकता है भाई. भाई अब तो सभी डिजर्व करता है जो भी टीम है. Who knows भाई? Who knows? ना उनके लिए सबसे कम वोट है. अब तो मैं कहूँगा पब्लिक साली पब्लिक वोट है. तुम लोग कोई काला जादू करते हो. देख आरएनएस की वोट लगे इनकी बात लग गई. भाई तुम लोग देख लो तुम्हारा है भाई. अब देख लो भाई तुम लोग ने वोट किया था भाई आरएनएस के लिए. आरएनएस लग गई आरएनएस की. तुम जिसके लिए वोट करते हो उसकी लग जाती है. मत कर. टकला हैज टू बी एमवीपी ऑफ वर्ल्ड टूर्नामेंट. Yes. A little bit, not taking the natural comeback off the portal and just the Phantom Force reset. And of course, Desu is getting that last hit thanks to a little bit in part to the fluffy tail that Gatlu carries. Yeah, Dragonite, I think, probably the most impressive central area character this weekend. It's a monster inside of team fights, but it's also just incredible. यही वाली क्लिप बार-बार लगा रहे हैं ये लोग. Look at that squad right now. Nouns Esports up 1-0. I know they are confident. That man who had his hand. वो कैमरामैन भी उसके पीछे पड़ा है. Helping out the player of the game, Desu, on that Dragonite. Dragonite built for damage here. Both Muscle Band and Scope Lens helping your auto attacks hit even harder. And X attack. You thought Hyper Beam's good at securing an objective. Wait till you tap an X attack and it gets about 20% better. Scaling is a good thing. Desu knows that best. You see them there making sure that ये लोग जम गया. अब पता है ये वाला राउंड ये लोग बिना डरे खेलेंगे एकदम चिल होकर. Our players are getting ready. सेकंड वाला राउंड में चिल रहते ना कि थर्ड एक राउंड और है. फिर उसमें फटती है लास्ट राउंड में. From making it to the grand final. Johnny भैया क्या कर रहे हैं यहाँ? Nice a win or go home scenario. Good point, Jeff. Let's take a look at what our teams are going to be hovering for game number 2. टकलू जीत गया. भाई देखते भाई ये मैच निकालेगा तो भाई टकलू का टीम फाइनल होगा भाई. अबे ग्रेनेड हटा. अबे वो पुरानी स्ट्रेटजी का था ना. ये सिल्वियन वाली. ये फालतू होगा पता नहीं हो सकता है. मैं बोल रहा हूँ वो फ्री होके खेल रहा है ये वाला राउंड. अबे डेलफॉक्स दिखने वाला है भाई. फाइनली कुछ तो नया कर रहे. अबे इनके पास में वो भी नहीं है भाई. पता है तेरे को इस टाइम से ब्लीसी तो इनकी वाट लग जाएगी भाई. अगर कामरू अच्छे से खेल गया ना. डेलफॉक्स जंगलर भाई. डेलफॉक्स जंगलर गाइस. अभी तक हमने डेलफॉक्स जंगलर पहली बार देख रहा हूँ. पहली बार देख रहा हूँ डेलफॉक्स. Wow, okay, Delphox wanting to leverage that Unite move as often as possible, which, as you were saying, is going to be incredibly often. It wouldn't be Kamiru if they वो भी एनर्जी हम शेलबेल वाला है वो. new Pokemon to the world stage here in our losers finals. I'm very excited for what Renaissance is going to bring in our game number 2. Nouns are going to have to be जंगल इन्वाइट करने घुस गया तो मजा आएगा भाई. They're expecting this Delphox pick out of Renaissance. It'll be interesting to see how the Sylveon gets leverage out of Nouns as well, because remember, you know, Renaissance is picking this Delphox kind of into the competition they just played against, and now it's भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बे जंगलर ये देखने के लिए. देखते हैं भाई क्या करता है जंगल में डेलफॉक्स. ये काउंटर भी एक तरीके से काउंटर भी. I like सिल्वियन. देखो भाई सिल्वियन खेल रहा है भाई. मतलब हीलिंग कम कर देता ना ट्रेवेनेंट और बैकिंग में. अर्ली गेम नाउन का अच्छा जा रहा.
नाउन वाले के पास बीसी भी नहीं है ना, लगने वाला है शायद नाउन वाले के। अरे रे आरनेस पर ऐसी तैसी करवा दी, मर गया। अरे ये छोटी-छोटी गलतियां भारी पड़ जाती है लास्ट में। Absolute menace, dealing damage to both wild Pokemon and the opponents. And it's a great way to find themselves an early KO, which they did onto the Nice, Serena super. at that time. So their path towards that level 6 breakpoint is going to be much longer than Red Moss. Speaking of breakpoints, Red Moss 5 already level 5, working towards that. These bees engage plus a decent dunk afterward could easily get them level में आगे हैं. There we go. Now a 3 और ज़रीना का लेवल बहुत कम है, आरनेस का तो ऐसे मरेगा so incredibly though. They have to take both citrus berries, but because of that 3 की ज़रीना 5 की ज़रीना of AOS energy deposited. वो क्या हो रहा है? भाई इन्वाइट करने जा रहा है ट्रेवेनेंट, देख gives them a lot of really important XP early in the game like this, as we see just an incredible brawl. तो obviously प्रेशर डालेगा। अरे बाप रे, 3 लेवल के बंदे। पोर्टल उसका देख रहा है पोर्टल। He's just the absolute homie, getting the reset for both of those players themselves and Gatlu. ये तो स्कैम है। ज़रीना घुस के कर रही मिस्टेक, मार भी रही, देख लेवल ही नहीं है भाई उसका। Right now you can see the damage already from these stomps. 7 की हो गई ज़रीना, ये गेम गया। Like Blissey, really clutch micro play from the Bulbasaur in the bottom path. They saw Mr. Mime rev up their confusion and tap their full heal to avoid getting pushed into the wall and ultimately कहाँ 3 की ज़रीना है बे, 4 की तो कर बे, कहाँ घुस रहा भाई? Still at level 3, a bond sweep. अरे कहाँ घुस रहा? अच्छा वो सोच रहा मार के लेवल ले लूँगा। 3-7 की ज़रीना मार पा। We see that mystical fire blasting off a fireball in front of the Delphox here. We interested to see if there is fire spin or the more mobile flame charge taken as the second attack here at level 7. A very interesting choice. Kamiru, I'm sure they can make either build work and make it look clean here on the world stage. They have been absolutely phenomenal so far. Yang on this Venusaur gets surprised. भाई नीचे भी 7 लेवल हो रखे भाई। ये TS ने जादू टोना करके लेवल अप बढ़ा ले इसी। नीचे भी भाई 2 किल ज़रीना ही मार देगा भाई ऐसे। अरे मरती ज़रीना फोकस एक्टिवेट। और शील्ड मिला इसको। टर्मिनेट तो फोर्स कर रहा है उनको। सिल्वियन यूनिट लेके घुस गया भाई। गंदा। टॉप पे निकल गए वो लोग। भाई कुछ है ही नहीं नीचे अब। ऐसे फार्म करो छोड़ो। अरे उठा लिया डेल्फॉक्स को। गया भाई डेल्फॉक्स। रिजेक्ट मार लिया उसने। क्या ये क्या चल रहा है? डेल्फॉक्स अरे वो मिस्टिक फायर कर रहा। क्या मिस्टिक फायर? हाँ। रियली? मोबिलिटी है लेकिन क्या मोबिलिटी से बेटर तो वो है। भाई घुस के मार रहे हैं इनको तो भाई। शॉट क्या लगी ट्रक की तरह माइम की। खत्म है भाई आरएनएस का सीन खत्म है। भाई क्या ले लिया ब्रो। जीत गई ना। मैं बता रहा था भाई। अगर ये ब्लैक हैंड को भी मारेगा ना मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा और ऑलरेडी 3 बार हो चुका हूं। सही बात है शोगन, सही का एकदम। भाई आईएक्स को मारा है, ईएस को मारा है, इनको मार रहे हैं। आरएनएस को has a hold over top of this whole map. 2 Pokemon in both paths, and even Bruv playing around the center of the map, making sure that they have vision. इनके यूनाइट तक नहीं खुले अभी किसी के। know where Renaissance is trying to make a push. We talked about Delphox having that quick charging rate. एक टीम फाइट जीत गई ना अगर सब कुछ हो सकता है आरएनएस। to reach that level 9 point. We're at the 5-minute mark almost. They haven't. अब एक स्टन खेलना था बे डेल्फॉक्स को, क्या खेल रहा? इनको मारना हो किसी ना किसी को तभी लेवल बढ़ेगा। We see Zarina. मार दे ज़रीना। ओवर कमिट किया ना उसने शुरुआत में सेरिना ने, सबसे लग गया उसको। गंदा वाला एक मिस्टेक खत्म। बहुत बढ़िया लेवल मेंटेन होगा। अरे भाई अरे किधर मार रहा है भाई ये मिस्टिक फायर? लग भी नहीं रहा है इसके तो। वो आउटप्ले हो गया भाई एक बंदे पे यूनाइट।
going over जो the इतना तेज favor हिलता है। esports and another वाह, objective किसने लिया? added अच्छा, to नाउन the ने लिया। European champions tally. Nouns Esports is winning absolutely everything on this remote stadium day here. 199-0. They're even going after the road. Renaissance is mounting an offense, but they're here quite late. Yep, can they secure this last hit? We see Unite. चल एक का किल तो खाया। There is a button on this जरीना का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। I expect Renaissance to push this top. अभी यही टाइम है मारने का। ये जीत गया टीम फाइट। लेकिन वो लेवल नहीं दे रहे, मर के लेवल नहीं दे रहे वो। अरे रोटम पोस्ट नाइस। They break it just before the Rotom hits. Renaissance gets some value. They're Wow. back in this game. Yes, Renaissance has 2 Unite moves here, so yes, we are अबे और लेवल मेंटेन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना जल्दी आ गया इसके Unite, ये बढ़िया है। अगर कुछ हो सकता है, I don't know, कुछ तो हो सकता है। अरे Venusaur गया। नहीं होगा अभी। अबे बैरियर में क्या फंसा रहा है यार मिस्टर माइंड। पकड़ के भर रहा है भाई वो तो बैरियर में। Masterful play from Bruv on this mine there. Renaissance fighting off ये लोग लेवल अप way नहीं more करने than they could handle, pushing in my and words, that tier 2 goals बताओ। along with the Rotom. Sometimes when you're down by this much in a game, सिल्वियन you को just कम मत need to समझ make रहे a हो, बहुत play फायदा to उसमें make भी। something happen, or बहुत at least पावरफुल है that's the way सिल्वियन। it can feel. But उसका now हाइपर भी और Esports कालमान playing बहुत इन पे ज्यादा पावरफुल डिपेंड है। होता है। great punish मतलब on अभी जैसे Renaissance's माइम हो push. गया, वो रोकता है, ये मारता है पकड़ Being के। down over 100 points. Renaissance is रीजनर्स वाले टीम फाइट निकाल सकते रहे लग रहा है भाई। कौन? आरएनएस वाले जैक बस फाइट। वीना को 13 करना हाँ होगा, वही। सेरिना को। लेवल नहीं और वो कहाँ से निकालेंगे? देखो तो पूरा ब्लीसी 12 ने लेवल सही है हमारा। ब्लीसी ने सही से यूनिट दे दिया ना वीना पे। 12 तो हो गया है वैसे। अब इसको 13 करना है। अभी तो स्टन खेलना था ना इसको, कैमरू को क्या खेल रहा है ये? अगर घुमाता ना बहुत फायदा होता इनको। वही जरीना रीना फंसा लेते, माइम फंसा लेता, माइम जरीना को फंसा सकते थे। मैं बहुत काम का वो मल्टी टारगेट भी करता है ना बाउंडर वाला। वो घुमाने वाला मूवसेट बैंड है। ये क्या? अबे नहीं मिला वो भाई, इधर ही फाइट होगा। किसको मिला ये? हाँ नाउन को मिला। नाउन को नहीं मिला। अच्छा नाउन को मिला। हाँ भाई इधर खत्म हो गया। खत्म। भाई टीम फाइट भी वही जीत रहे हैं। अनाइलेट हो गया भाई। ब्लीसी का भी यूनिट यूज हो गया ना। जरीना का यूनाइट नहीं है। अरे बाप इनको रे। सरप्राइज एलिमेंट से मार देना होगा ये। इसका का यूनाइट भी नहीं है। ब्लीसी का यूनाइट भी नहीं है। टेलफॉक्स का भी नहीं है शायद। अरे बाप रे बाप रे। बस वीना का है, वीना का हो गया, उसका भी हो गया, खत्म हो गया। अभी उनको डिले करवाना है बस। गया भाई ये तो। वीना ये हो गया, आउट जोन हो गया, जोन आउट हो गया, खत्म। लॉल खत्म भाई। जी भाई। Single member of Nouns Esports being knocked out. Nouns Esports, your European region champions, looking to put themselves in a phenomenal position to make it back to the grand finals today. In one of the most dominant games that we have had here on the world stage, Nouns Esports is going to win your losers finals match here and make their debut in the grand finals very shortly. Nouns Esports पनौती मत करना वोट अब, जिसको हरवाना हो उसके लिए वोट करना। They are coming for that title. Nouns Esports maybe put some doubt in their fans' minds, but if they believed and sent their करेंगे ना उनके लिए energy, शायद it certainly worked. ज़्यादातर। Nouns Esports 746, 285 right now. They may put up a defense here. Renaissance playing for the 68 हो गया, last little bit of their 69 tournament lives. They 1% looked for Nouns, amazing, बताओ। but Nouns Esports was just that much पसंद better नहीं in करते this कुछ game. टकले को। Renaissance dancing on और the बोल bottom टकला point, MVP it है। looks like here as Unite moves start getting fired off as we have the final 30 seconds of Renaissance being on the main stage. Nouns Esports still भाई ट्रेवनेट मार मार के आधा कर दिया ट्रेनरों का हेल्थ। इतना टाइम मिला है उनके पास। that the EU region is here to play वो and they बुक are फ्लॉप हो गई finding ना मेरी तो। themselves in the grand भाई finals. क्या मिल्टू है? बाप रे। ये का गोल गोल घूम रहा हूँ। They love Bruv on this Mr. Mime. What a fantastic way for क्या Nouns देखने to को make मिल it रहा है भाई all वही से। the way. There we go. Silvenium please. You all know the scoreline. Nouns Esports is headed to the grand finals in a dominant 2-0 victory. They have बाप a रे। formidable opponent waiting for them there Nice in Black यार। Camp, but for now, they can breathe a quick sigh of relief. They have made it past the losers finals. And गुड नाइट भाई। ओके भाई गुड नाइट भाई। अरे फाइनल मैच तो दिख के जाओ रे।
अभी तो फाइनल होगा ना भाई, ग्रैंड फाइनल। So incredible this entire tournament run. Let's talk about Renaissance for just a short moment here. They were playing phenomenally. किसी और को भी तो दिखा ले, उसको ही दिखा रहा था। इस मैच में तो है अभी तो सही बोला तू। अभी ये जरीना है ना, जरीना का अर्ली गेम बहुत अच्छा था। किसका? जरीना का। अबे 1,20,000 माय फेवरेट हार गई भाई। आरएनएस बाहर हो गया रे। चिल खेल रहे थे लिटरली, कुछ भी टेंशन नहीं है, ऐसे ही खेल रहे थे, मतलब मजाक मजाक में ऐसा लग रहा था वो। मैंने तेरे से नहीं बोला था कि सेकंड मैच उनको कोई टेंशन नहीं है। लिटरली ब्रो, अबे एक मिस्टेक सेरेना से पूरा मैच हिल गया लिटरली स्टार्टिंग में। अब किसका मैच है? अभी इनका ही रहेगा ना, ब्लैक एंड वर्सेस इसका नाउंस वर्सेस ब्लैक एंड। बोला था ना नाउंस भाई, नाउंस भाई भाई जीत ही जाएंगे, कोई भरोसा नहीं भाई। इंडिया का कौन सी टीम थी भाई? आरएनटी, रेवेनेंट गेमिंग, रेवेनेंट था भाई, रेवेनेंट का टीम था। जो भी हो लेकिन नाउन खेली अच्छा, अच्छा लगा इनका मैच देख के। Finals when everything is on the line is a great place to do it, but an even better place is going to be in the grand finals here coming up for them soon. Now esports playing so incredibly, but you're right, job not done. Get back in there. You got another one to win. Red March. अबे फिर उसने क्यों लिया है डेल्फॉक्स? वो कहा है जीती है। अरे वो फर्स्ट डे में बाहर हो गया रे। अभी तो फाइनल चल रहा है भाई। उसका मैच कब है भाई? हो गया भाई, उनका मैच हो गया, कल ही हुआ था, बाहर हो गया। वो ड्रैगनाइट सोच के लाया होगा, पता है वो ड्रैगनाइट सोच के लाया होगा। ड्रैगनाइट हो सकता है। Also showcasing some variety of Pokemon selection. Their Dragonite definitely played off extremely well in game number 1, but when they switched it over to Sylveon, they even found a ton of value there. Yeah, I think those are the teams that always impress me the most, where they win a game and they're able to step back and recognize, hey, we need to reassess some of the things that happened here, even though we were successful. Yeah, whether you're making the change to clean up some of your own gameplay, you're making the change to try to take the enemy off guard. There are so many strategies in Pokemon that unite that happen even before you head into the actual game that takes 10 minutes. Lots of prep, lots of planning, and the player of the game here is going to be Redma with a lights out performance. इससे ये समझ में आता है कि अर्ली गेम में अगर तुम जरीना से लेवल अप हो जाते हो, टॉप लेनर अर्ली गेम स्ट्रांग है तो डोमिनेट कर सकते हो तुम। सामने वालों को लेवल अप मत दो, डोमिनेट करते रहो। Serena was looking amazing. अब देख सब नाउन के लिए वोट कर रहे हैं, जिसमें नाउन आ रहे हैं। जानबूझ के बंदों को पता है नाउन हारना चाहिए, तो सब नाउन के लिए वोट कर रहे हैं। अब नाउन गया, अभी तो डेथ नोट में नाम लिख लिया उनका, खत्म हो गया। कौन सा टीम फाइनल जीतेगी बताओ भाई, तुम बताओ यार, वोट डालता मैं भी। हमारी वोटिंग डेथ नोट का काम करती है। उल्टा वाला है, उल्टा वाला। अभी हमने बस नहीं भाई, टकलू फाइनल निकालेगा भाई, देखेगा भाई कौन निकालेगा। दूसरा सेंस बुलाता है, छोटा सेंस तो बुलाए 2-4 में रूम में, देखता है शाम को। अभी शुरुआत की गेम यहाँ पर खेलेंगे, बाद की गेम वहाँ पर खेलेंगे। तो मैं लेट गेम खेलने वाला बंदा हूँ, मैं लेट गेम खेलने वाला बंदा हूँ, तो मैं बस ले लेता हूँ गेम में। It has definitely worked out for you and Nouns Esports. You are in the grand finals, and one question I personally have to ask: how have you enjoyed being in the first seat and always getting to turn to the camera and make all the faces, blow all the kisses? Pros की आदत है. Camera is like I felt it's a part of my life. Really good indeed. We can see your energy. We can feel how hype you are, and you got a tough road ahead. You got to win 2 on the hot best of 5. Grand finals action on their way. You go get ready. I'm Duke I'll be back in the booth. I'm going to bring you. मुझे नाउस लग रहा है क्योंकि ब्लैक हैंड्स काइंड ऑफ ओवरलॉर्ड पे ज़्यादा डिपेंड करती है। नाउस से तो हाँ भाई, सुधरे नहीं जो भी लिखा है।
before we get into those grand finals, let's take a look at the path that we took to get here. Blackhand undefeated throughout this upper bracket. एक champion बनेगा. Three matches to make it here. Nouns Esports taking a much longer journey, losing in the first round of the winners bracket and climbing all the way up the incredibly tough lower bracket to make it back to the grand finals, where they now have to win not one but two best of fives if they want to be the Pokemon Unite World Champions. That's true. And as for Renaissance and the APAC region, they had an incredible run. They are out in the third position, but third at the first ever Pokemon Unite World Championship is an incredible feat. So congratulations to that team as well. We are going to have only one more match for you upcoming. It is the grand finals. That'll be with you shortly. Champion. भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भगवान जाने और अपनी जनता जाने के नाउन को कितना वोट मिला नाउन को 59%. उल्टा वोट देना रे मेरे भाई. जिसको जिताना चाहते हो उसको इसको हरवाना उसको वोट देना, तभी तुम्हारी वो लगती है. टकलू तोड़ देगा ब्लैक हैंड को. लेट्स सी. अबे लेकिन सोचा नहीं था कि नाउन जीत सकता है. बताओ, मतलब समझ रहा, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो जा रही है. अबे मामे यार, इसकी याद आ रही है मामे की. सही में वे दिल से बुरा लगा बे उसके लिए. मामे मेरा भाई यार. लेकिन जो भी कहो यार, सारी टीम्स बहुत शानदार खेली, पता है, सारी की सारी. वो एक सेंट्रेस वाला बस छोड़ के और माचम वाला, बाकी सब शानदार था. अबे मैचम ने क्या किया, उसमें तो लिया है ना, जितवाया उसने. हाँ, ये भी बात है. वन प्लेयर कैरी वाली टीम का मुश्किल होता है जीतना. उसको टारगेट करेगा स्कोप रोल के. वही भाई देखते भाई विंजर के जापानीज फ्रेंड. बस वो एक ब्लीसी की गलती और टी2 बाहर. ब्रो, जब भी स्नोरलेक्स लेके खेलो, फ्लेल या यॉन मूव लेके खेलना. शील्ड मस्त है यार उसका स्टन. इतना टीम गेम देख रहे, सीखो तो कुछ यार. पोल चेंज करो, वो विल लूज. नहीं यार, वो डला रहने दो. नाउन पे मोमेंटम है. अबे यार, इनके गोल हो जाते तो ये कसम से जीत जाता यार. हाँ भाई, भाई ग्रेनिंजा एम्बलम बताओ. बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा. इंडिया तो पहली बाहर. कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट दे ट्राई. इट इज ओके. हो जाता है यार, उन्होंने अपना बेस्ट दिया. क्या कर सकते हैं. फोर्टी 41 सेकेंड. अभी वो नाश्ता कराने वाली लड़की ने दिखाए बच्चे लोग. ब्रो, यू एंड ऑल डिस्कॉर्ड मैच. क्या लगता है इको? क्या लगता है? सब लोग बताओ, अल्फा कौन जीतेगा? वो भाई नाउन भी जीत सकता है. इको बोला नाउन. शोगन. अरे कुछ बता नहीं सकता रे. 50-50 है दोनों. ब्लैक हैंड्स के लिए एक सुनो. नहीं, एक भाई, चीटिंग नहीं. एक
नाउन या ब्लैक हैंड? मैं ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड अल्फा। अबे आगे ट्रॉफी। और तू शोगल? अरे मैं तो बोल दिया ना ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड्स और ये नाउन करो तेरे को टकले से क्या प्यार है ऐसा? अरे नहीं रे, उनका स्ट्रैटेजी मतलब सही है भाई। अरे इनका पता है ब्लैक हैंड वाला का ओवरलॉर्ड चलेगा तो चलेगा भाई, फिर पता नहीं जैप फाइट में क्या होगा। तो स्ट्रगल कर सकते करें। मामा कहाँ गया यार, वो सही है। तो बात इसकी तरफ हूँ थोड़ा सा, मेरे को उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। हालांकि मेरे को उनका गेम प्ले बहुत पसंद आ रहा है अभी जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं नाउन। मेरे को मानने का अच्छा लगा गेम प्ले। अबे फिर भी पता नहीं कौन जीतेगा भाई, ये मार रहे सबको। 50-50 है रे दोनों भाई। सबको मार के अभी क्या ब्लैक हैंड का नाम है, अभी देखना पड़ेगा इनको भी मारेगी कि नहीं। बस भाई तीनों को मारा है लिटरली स्ट्रीट में, वो भी। जो भी हो पैसा तो मिल गया लाखों। लाखों भाई, वो तो है ना, वो तो है। मिल गया भाई, पूरी टीम को एटलीस्ट 5-5 लाख तो मिलेगा अभी सेकंड भी आए तो। 5 लाख भाई, 5 लाख से ज्यादा है। पहला ही प्राइस 80 लाख है। अरे बाप रे, एक प्लेयर को नहीं रे, पूरा टीम को। हाँ वही तो। Thousands of players, regions from all over the world, the best of the best have come here to London, and it comes down to this. North America, EU, who is the best Pokemon Unite team in the world? You are about to see the most important matches of Pokemon Unite that have ever been played, and yes, that includes some of my solo queue games. That's embarrassing. Sprague's Pokemon Unite championship series is built up to this moment. These teams have grinded out for 6-7 months since the game drop, coming together. You've got Nouns Esports just taking down EU month after month after month, and Blackhand spiking the big one at the end of the season. The regional finals getting first and really converting that into a big showing here on the world stage. Blackhand coming into this काश ये मैच जल्दी स्टार्ट हो जाए। at the World Championships. Nouns coming into this from the losers bracket. They're going to have to beat Blackhand. Guys, ये फाइनल है, जो जीता वो चैंपियन। Let's take a look at the undefeated Blackhand, Curios / Jungle Book Undefeated Overlord प्रेसिडेंट्स। हाँ तो टॉप वाले मतलब जो अपर पैकेट है उसमें हारी नहीं ना वो टीम। In the Blackhand squad is excellent. Their coach. Big shout out to जादू टोना करके आए काला हाथ। coaching them up through this whole series, through the whole season. काला हाथ नहीं। कमेंट्री। These 5 players found themselves and now find बंदे के themselves साथ on मैं the कोलैब stage. करूंगा Tip of the cap किसी to दिन। them. Definitely Guys, the 6th man यार in this इंग्लिश नहीं roster, आता। and they deserve every ounce of credit along with these 5 players. ये वो भी हमें मतलब उस लेवल का नहीं आता भी। कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, इसलिए मेरा एडमिशन कनाडा में नहीं हो रहा, वरना मैं कब का चला जाता। तकले का लक 4 लुका की देन है। वे स्टार्ट हो रहा है जल्दी। कोलैब करूंगा इसी दिन। Let's take a look here at Nouns Esports, your EU मजा आएगा, दुनिया की champions, दो and they are सबसे no पावरफुल टीम stranger to a सामने आमने situation सामने। like यस this. They have clawed their way through a बस losers देखो शेरिंगन मारो bracket बस। before, all the way to the grand finals. Gotta Intense होने reset वाला है ये। and gotta win. If anyone can win भाई today, टकला भाई। it is Nouns Esports. अनबीटेबल वर्सेस अनबीटेबल। अपर ब्रैकेट वर्सेस लोअर ब्रैकेट होने वाला है। Big boy, strong in the game, strong outside the game, and I think that's important. Yeah, well, without a doubt, you know, your physical as strong as your mental, it makes sense. ये सबको खा रहा है ऐसे करके। We see those 3 players, Redmaw, Geese, and of course, Bruv, who we were just talking about. Redmaw had a phenomenal performance on this arena last time we were on the desk, showed out again, this time getting that player of the game in their second game against Renaissance. Here we go. Loading in here, you can see Nouns Esports getting ready, maybe using a couple energy rewards. You need to get a few boost emblems before you start this whole thing off. कौन जीतेगा भाई? I cannot wait to see these 2 teams go at it. You know, one of my favorite things about this Dupe Snacks, we have gotten to cast both Blackhand and Nouns Esports. We saw them win. टकले का लकी चार्म लुकारियो की डॉल है। लेके बैठा है भाई लुकारियो की डॉल। इसको लग रहा है मेकअप करा। देख लो।
And I think Nouns Esports is just phenomenal. One of the best teams to ever play the game. Are they the best ever? We are actually going to find out. You know all those conversations that are had about what's the best meta, who can do this and who can do that? Why is Spraggle so bad? Well, we are going to find out today which team is the best, which region is the best. NA versus EU. Now a storyline point here. Nouns Esports to win their first you can do it. actually found themselves through the losers bracket, hit a grand final reset, and won that best of 5. So this is not unfamiliar territory for them. This is just another day in the office. They are ready to go. Let me tell you what's unfamiliar to Blackhand. Losing. They have come here undefeated. They crushed it in North America. And you know what? I don't think they plan on losing here today, taking down teams like Renaissance 2-0. Blackhand can always find a way to pull out a victory. Well, every team that Blackhand has beat, they put them in front of Nouns Esports, whom Nouns Esports also beat to get to this end. Training ground में practice चल रही है. And Nouns Esports आज हम खेलने वाला लगता है वो. मेरे को भी लग रहा. अभी तो बहुत बेकार खेला था ना वो मैच को ऐसा वो नाउन का था ना. हाँ शायद कौन बेकार खेला उस टीम में नाउन के टीम. अरे एनर्जी हम लगा के आया था ना. ये जैप स्टील किया था भाई. नाउन का है क्या वो? हाँ नाउन का ही था ना. नाउन का थोड़ा ना. फिर क्या तो किसका था तो? अगल नाउन का नहीं था वो आई जो करके थे ना क्या नाम है? अरे बता रहा जिनकी टीम में सिंड्रेस खिलाई था वो आई करके था. वो ब्लैक हैंड ही है ना? ब्लैक हैंड कहाँ है? ब्लैक हैंड का कोई बंदा बेकार नहीं है. अरे मतलब ब्लैक हैंड के अंदर ही सिंड्रेस खेला ना? पता नहीं किसने खेला. वर्ल्ड की फाइनल टीम, वर्ल्ड का फाइनल मैच चल रहा है. 2 टीम्स टकरा रही हैं, ब्लैक हैंड वर्सेस नाउन. देखते हैं अभी नहीं, अभी चालू होने वाला है, अभी चालू नहीं हुआ. दोनों में से कोई एक जीतेगा. सारी दुनिया की टीम थी. अभी एक कहाँ की है? अभी एक एनए की है और एक नहीं देश बता देश क्या बताता था. अमेरिका साउथ अमेरिका ऐसे ही है. नहीं ऐसे ही है. एक अमेरिका की है, एक यूरोप की है. हाँ ब्लैक हैंड नॉर्थ अमेरिका का. नॉर्थ अमेरिका. हाँ और नाउन्स वाले यूरोप का है. यूरोप और नॉर्थ अमेरिका. Here we go, big Zapdos fight right here. Blackhand choosing to bring them all in with the hoop up top. And after that they said, Overlord, can you clean this whole thing up? Maybe अगर Overlord ने इस गेम में निकाल दिया ना, कसम से बोल रहा हूँ उसको पूरे गेम का MVP मिलेगा. हालांकि ये टकला भी अच्छा खेला. बट अब बैकहैंड में से सब पूरे आधे से मतलब पूरे MVP उसको मिले हैं. हाँ मैं बता रहा हूँ MVP जाएगा. अलग से पैसा मिलेगा साले को. वो पता है सही बताऊँ ना, वो गेम का मतलब इस बार पोकेमॉन यूनाइट का जॉनाथन बन गया. जॉनी जैसे पोकेमॉन जैसे BGMI में इंडिया में जॉनी का नाम फेमस है ना, जॉनाथन, वैसे ही इस गेम में अगर खेल लिया तो ओवरलॉर्ड का नाम याद करेंगे. हर मैच में MVP जीते ना जीते देखना वो MVP रहता है हमेशा जॉनी. Draft is getting ready to go, so we're going to hold off on the highlight reel because टॉप फ्रैगर ओपी भाई. इधर टॉप फ्रैगिंग ये कर रहा है ओवरलॉर्ड. वही ये लो भाई क्या दिखेगा. Nouns Esports, your purple team. मैं बोला था ना तेरा सिंडी जिंदा है, खेलेगा वो. I've been waiting on book on this Cinderace all day long and I can't wait to get them to play. Nouns Esports know what they're up against. These two aren't unfamiliar from each other. They've scrimmed together. They know what the skill sets are between these two teams and they know how to play. अरे जैसे भी मारता है ओवरलॉर्ड. वो बॉटम खेलेगा. अरे वो क्या सोच के आ रहा है? हम को सोच रहे सिल्वियन आएगी इसलिए ला रहा है. Into this game, we've got Blackhand saying एजे बॉटम खेलने वाला है. भाई ये पहली बार वो खेल रहा है ना एजी नाउन वाले शायद. मतलब तक ये 3 मैच के अंदर. Here we go. क्या टेक्निक चालू हो गई. Loading into the game, focused up, ready to become champions. I'm trying to see in their chest if we've got some hearts beating out a little bit, but it seems like they're पिछले बार मैच हमने ले लिया. इस बार पता नहीं कौन लेगा. फाइनल मैच है फाइनल. I do not want जो जीतेगा वर्ल्ड चैंपियन.
waiting to load into this game. I believe I'm being told until Doomstax touches my chest. Never mind, here we go. Blackhand in that central layer. They're going to be in the orange. चलो भाई. The Dragonite, they showed us the Dragonite. अरे तुझे पता है वही जंगलर है इसकी टीम में. You know that? Here we go. Fight over this top Ladino. Stacking it up here with the Trevenant in the bottom path, looking to secure this Ladino, and they're going for the classic 1-1-3 North American meta here. Trevenant को भी मारना. Kilo is getting all over Gatlu, and they get a KO to Curios. That huge. Already level 4. They need to hit level 5 for the Trevenant. That's a great. Blackhand. He's looking to secure and probably. Trevenant दे दिया bro. नहीं अरे तू देखना वो क्या खेल रहा है. 1-1-3 खेल रहा है और 2-1-2 है. समझ रहा? ना उनके 2-1-2 हैं और उधर पे 1-1-3 मतलब ऊपर एजी अकेला. इनका जो भी है एजी अकेला यहाँ पर. अरे ऊपर था साथ में. ऊपर आया देख. नहीं था नीचे. अरे वो स्टार्टिंग में हाँ स्टार्टिंग में 1-1-3 करता है. सेकंड 20 पे ऊपर आते चारों बंदे. चारों बंदे. स्ट्रेटजी होती है. पता नहीं अब देखो. इंडिया देख 4-man पुश किया उन्होंने. 4-man नाइस पुश. अब नीचे जाएगा वो इधर स्कोर कर गया. ये तो गंदा था ब्रो. इनसेन था ये. कुछ भी नहीं होने वाला. सबके गोल्स लगेंगे. अरे 17 का छोड़ा है. 8 मिनट भी नहीं हुआ अभी तक. And now we can see the Dragonair from Nouns actually heading into the central area of Blackhand, trying to take something away from the Cinderacer, but Blissey looks like they are pushing it out a little bit. Yeah, Slash is saying, get out of here. Come on. जंगल करने आए थे ये. अच्छा नहीं कर पाया. जंगल आया ही नहीं है. क्या लेड जंगल सेंडी का. नहीं सेंडी कर लिया जंगल पहले. अरे नाइस टाइमिंग. सेंडी मार सकता है ड्रैगनाइट को. भाग गया ड्रैगनाइट. अरे सेंडी बन गया. अभी नॉन वाले दिक्कत खा रहे हैं अभी. Possibly, but they need to give some experience to Adesu as well. It's very close, but I think that Dragonite might be a little more important than an Aegis Slash here coming up. अभी इनका एजी पहली बार देख रहा हूँ मैं नॉन से. Shares on Blackhand side. They're going to be getting experience, you know, truck and trailer with the rest of their squad. Not a bad look. Here we go. 10 seconds. ये ट्रेडिशनल वाले खेल रहा है. अभी जो शुरुआत के कंपटीशन में कर रहा था. समझ गया मैं. Jungle Book looking to take a third rotation. ये 9 लेवल लेने के लिए रुका है जंगल में. जंगल करके जाएगा बताओ. हाँ मैं समझ गया ना वो ना हो जिससे. Curious is trying to push them around. They got a curse going. They're going to chase down Gatlu a little bit. They're on the backside. Can they push them back off the point? They catch Bruv, but Bruv has too much HP. They just got to get out. Here we go, moving down for our fight right आगे here. सेंडी नीचे. सेंटर 8 का है. We do not yet have a Dragonite. नहीं आया यूनाइट. Just evolving right here. Jungle Book not quite at 9, but so होने वाला है यूनाइट. जंगल बुक का यूनाइट होने वाला है. If it ticks over to level 9, we can see a massive. उसका तो आ ही जाएगा. आ गया. सिक्योर है. Adesu looks like they are going down. Swords cutting them up. Yeah, they're trying to find खत्म भाई सरीना. Slash is so low, but the Dragonite is down. भाई क्या ही पोर्टल है ब्रो. इंसेन पोर्टल में. Back the other way on Slash. They're moving forward. इनका ऊपर गेम बदलता है पता है हमेशा. शायद इनको कूलडाउन पड़ा था क्या बंदों पे. वो बोलता है ओवरलॉर्ड में तुम्हार बस मैं देख लूंगा तेरे को भेज दूंगा. भाई ओवरलॉर्ड ले गया. भाई ओवरलॉर्ड ले गया भाई. स्टील कर लिया. Easy. भाई ये बहुत प्लेयर. Nouns cleaning up that. शानदार भाई शानदार. ये बंदा 4 बंदे 5 बंदे उधर वो लेके गया. सिक्योर सीधा से सिक्योर क्यों नहीं करा. मार गया वो सर. क्या बोलूं भाई. मुझसे बंदा करने वाला था. भाई उधर सब लास्ट हिट के लिए बैठे रहते हैं भाई. जिसको मिला उसका. 40 points in pocket with Adesu. They're going to see if they can make a move. Curious gets a push, but Gatlu's there as well. Quick little stomp does some damage. Curious has to back off. Can they get back into the bees? But as the sword comes in, they're half HP. Hyper beam comes through. They're so low. Chip shot. अरे दे दे. अरे लॉल मारने के बाद दे रहा ब्लीची. The Trevenant unite. अच्छा इसके साथ है ब्लीची. हाँ भूल गया. उनका ब्लीची तो नीचे है. किसको मारा है? अच्छा ट्रेवेनेंट को मारा. भाई ये तो ओडंग है बड़ा वाला. Here we go, Overlord heading towards the central area, just looking for as much experience. पता है सब अच्छे खेलते हैं बस सेंटर फाइट में पता नहीं क्या होता है इनको. देखें क्या होगा सेंटर फाइट में ब्लैक हैंड का.
just all of Black-Hand. लेवल देख बराबर ज्यादा ही है। Black-Hand का ज्यादा है लेवल अभी। नहीं हो पाएगा गोल नहीं हो पाएगा। Everyone is playing Pac-Man right now, looking for some yellow dots to eat so that they can get ready for these next big fights. But here comes the sword out of the tall grass. Gatlu being relentless. Geese helping out as well. Another Scald is going to help get this thing locked in, but Gatlu's absolutely relentless. They're sticking on top of Curious. Gatlu getting it done. वो था नहीं ना उसके पास। Looking beautiful. Ooh, got loose. Easy ऊपर मार सकता है, सेंडिस को मार सकता है। मारा एजी मारा। मैं होता तो मार देता। हाँ, अरे उसका 3 स्टैक हुआ था ना, वो मार देता अगर सेंडी को 2-3 स्टैक। सेंडी इतने आराम से नहीं मरता, उसके पास मोबिलिटी है। एजेस का स्टैक हो गया ना तो डैमेज देता है गंदा। ओवरलॉर्ड को टीम चेंज करनी चाहिए अपनी। भाई ओवरलॉर्ड को उठा दिया। सेंड्रेस को भगाए टीम से। मेरे को पड़ गया। अरे ओवरलॉर्ड गया। ये टारगेटिंग अच्छी थी। स्लोबर उठा दिया ना वो यूनाइट से। इसलिए तो लाया स्लोबर। वही ये चीज पता नहीं कौन सी टीम कर रही थी, शायद आईएक्स क्या पता नहीं किसी टीम कर रही थी, ट्राई कर रही थी बट नहीं हुआ। जब वो ग्रेनिंजा खेल रहा था ओवरलॉर्ड। अगर ओवरलॉर्ड मारा ना इधर बड़ा एक्सपी मिल गया इनको। मर गया। अरे क्या डैमेज, क्या बीम दिया भाई। वो घास में चुप के दिया, बढ़िया वाला। देख रहा टर्मिनेट से कैसे ले रहा है ये। हाँ देखा ना। Already sitting at level 13 is a great spot to be if you're Blackhand, but get some experiences with other players on your team. Overlord at 11 is a rare sight indeed. Here we go. Rotom heading down. ये सेरिना प्लेस को नीचे पहुंच जाएगा। उनकी स्ट्रेटजी देख। टर्मिनेट रोकेगा, नीचे पहुंच देंगे, तुरंत ऊपर पहुंचेंगे। इनसेन गोल्स नीचे। इसको नहीं मारेंगे तो गोल नहीं होगा। इसी तो मरेगी, छोड़ देगी, बस डिले करवाएगी बस। करवा दी, एक गोल नहीं होने दिया ब्लीसी ने। अरे हो जाए उसका। अरे बाप रे, बढ़िया। अभी नीचे लोग पुश कर सकते हैं शायद। बट नीचे दोनों के बेस बचे हैं। सिंडी आ रहा है नीचे और ऊपर जा रहा है। पोर्टल है ना, वो लोग तुरंत पहुंच जाएंगे नीचे। अबे वो तो उसको तो नहीं छोड़े क्या, इसको रोटम को। 2 minutes 30 seconds. मैं ओवरलॉर्ड 13 का हो जाएगा। We don't have another Rotom. We don't have another Dreadnought. We've just got one big fight. भाई सिंडर्स 14 लेवल का और का है भाई। The grand finals. Red Maw's already posturing. They're trying to keep an eye out for where सिंडर्स को भगाओ बे। Desu and everyone else just उसको बस यूनाइट देना घास में चुप शायद। as much experience as possible. वो भी नहीं करता, वो नहीं कर पाता ना, वो उसके पैर नहीं रुकते। वो बीच में अटैकों के बीच में खड़ा हो जाता है। तू देख अभी वो यही करने वाला है, देख अटैक के बीच में घुस जाएगा और मर जाएगा। देख अरे तो बता कौन लेगा ये लास्ट हिट, मतलब टीम का बात नहीं कर रहा, पोकेमॉन का बात कर रहा। लास्ट हिट चल मैं प्रेडिक्ट कर रहा, मैं जरीना एजेस स्लैश मैं बता रहा ड्रैगन। कौन जीत रहा है? अरे हुपा को यूनाइट दे दिया। किसने दिया है? भाई शी भाई ब्लैक एंड वाले। अरे मारा है भाई, इस बार तो मार रहे हैं। अबे ये सब निकल गए किनारे। अरे नॉन्स वाले के पास एक यूनाइट है। अबे रीसेट करेंगे शायद, रीसेट कर रहे हैं, हेल्थ रीसेट कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं। ड्रैगन ले सकता है, अरे ड्रैगन का स्टैक है, आउटजोन कर रहे थे। पोर्टल यार ये सबसे गंदी चीज है पोर्टल वाली। ओ भाई ले लिया, ऊपर लिया भाई लो, ऊपर लिया। ड्रैगन बेकार है। Tried to lull Nouns Esports in with a pseudo flip, and as soon as Gatlu got too far, jumped all over. Nouns Esports down, but not out. But there's not a ton of time left. Votings की power देख रहा है तो looking to defend right here. But more than anything,
anything, they're just looking for this timer to tick down because they know they're way ahead. Yeah, if they can just chip in and keep these scores from going in, they keep having Red Maw needing to reset. Oh Good egg bomb by Slash on the button, keeping Red Maw from scoring. And seconds left, and it's not enough for Nouns Esports. Blackhand taking game number 1 of your grand What a show by Blackhand. यही तो चाहिए होता है पहला ट्रैक तो दिखाया ओवरलॉर्ड ने भाई, वो बंदा अलग ही लेवल का है भाई। हुपा हुपी भाई। काला हाथ। वे पर ब्लैक हेड वाले का ब्लिसिन यूनिट हगा था वे, हुपा पे दे दिया था पता है। हाँ वो साला दिमाग से पैदल किसके ब्लैक हैंड वालों ने। हाँ इंस्टेंट कार्मा। चलो तो जिंदा तो रहेगा, मार तो खाएगा। उनके ब्लिसी ने वो चीज करी, उसके ब्लिसी ने भी वो चीज करी। इंस्टेंट स्पैम भी मेरा चल अच्छा गया इस बार, लेकिन मेरा लॉर्ड ही साथ था, मेरा साथ ओवरलॉर्ड के साथ में था। इस बार एमवीपी नहीं है ओवरलॉर्ड के लिए, इंडी को मिला। हाँ लास्ट मैच खेल गया लौंडा, 83 डैमेज दिया सिंडरस। अच्छा दिया। बोल रहा था ना कुछ भी हो सकता है। उसने दिमाग लगाया कि ऊपर जाकर ड्रैगनाइट को पहले डैश करने के पीछे पड़ गया। BO5 है भाई, BO5 है ये वाला। 5 मैचेस होंगे। हाँ 5 मैच हो गए। BO5 नहीं 3 ही तो दिखा रही है। नहीं BO5 है। अरे BO5 है, उसमें से जो 3 जीतेगा वो टीम जीतेगी भाई। BO5 है। अच्छा ओके ओके। Overlord should play jungle. We're going to take a look at some big moments here from game number 1. Can anyone beat Blackhand? I don't know. Doesn't look like best of 3 है, best of 3 है बे। नहीं BO5 है। अरे नहीं ऐसा नहीं है। BO5 है। अच्छा फाइनल है ना। But they caught a receipt for that real quick. That's right. Nouns was fighting so incredibly good throughout this entire match and taking objectives very well. But at the same time, in all these moments, Blackhand is moving around the map and they are picking up. Nouns जीता अगर तो एक और BO5 आएगा। क्यों? Nouns जीता अगर एक और BO5 क्यों? अच्छा हाँ भाई इतना प्यार से लिया उसने ड्रेडनो आराम से। आ गया। एक स्किल मारा खत्म, कुछ टेंशन नहीं। मैंने एक चीज देखा, ये लोग बहुत चिल होके लेते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव पहले मारा पीटी करते हैं। अरे स्किल भी है इनके पास। देख इधर देख, हुपा का यूनिट खत्म होने के बाद हुपा भी यूनिट दिया उसने। अबे भाई सही कहा तूने सही कहा। इधर भी गाली खाने वाली हरकत। ये हुपा को यूनिट दिया तो बेकार है भाई, गाली खाने वाली हरकत। हुपा को यूनिट दे दे तो कुछ काम चलता था। उसने सिंडी पे दिया था बट हुपा पे चला गया वो। ये कार्मा। एक और ले अंडा खाने, खा घुसा अंडा खा, कितना खाएगा खा। लोअर पैकेट से आया है। 6'6", 115, blaze kick, flame charge, Cinderace, and it looked good. Looking beautiful right here. Now the question is, we know that Jungle Book has a lot of different Pokemon at their disposal. Are they going to keep playing this Cinderace, which is of course amazing, or are they going to bring something out that Nouns doesn't expect here in game number 2? To support Noun. You know, in my heart, if I'm black, तुम लोग देखा, तुम लोग वोट करते हो ना जिसके लिए, उसका खत्म हो जाता था। really needs to be put on Nouns. अभी वोट दिया तो तुमने Noun के लिए ना, अभी ब्लैक एंड के लिए आ गए तो खत्म हो गया। इतना दूर जाके लग रहा है। तुम लोग जिसके लिए वोट करते हो वो टीम खत्म हो जाती है। अबे चार्जर नहीं, चार्लिज़ार्ड खाली जापान वाले खिलाते हैं। लूका देखने मिलेगा ओवरलॉर्ड के तरफ से। अभी तो देख उनका तो जल्दी खत्म कर रहा है। ये आया नाउन की तरफ से, वो क्या बोलते हैं माइंड नेटवर्क हटा दिया टीम से। अरे ये सेट तो है ना, ये लाए ब्लास्टोइज लाए उन्होंने, ब्लास्टोइज इनने और बाप रे ब्लास्टोइज को पैंट सिंडी तो व्हाट आर दे डूइंग भाई। फुल टैंक लाया ये लोग। इतना टैंक है माना मैंने।
Well, something to keep in mind is Blackhand has games to give. Of course, they want to shut this thing down. They want to go 3-0. They want to be the best in the world. They want to make a statement. तो क्या करेंगे? दूसरा स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा ना। फाइट ही ले रहे हैं ना, तो फाइट ही करेंगे बोलते हो जाए फाइट सीधा फाइट लेके ही जीतेंगे। उनको मार के देना है यार, ऐसा नहीं कि 50-50 करो। लेकिन एक बात बताऊं, सेंडी में हेल्ड कर सकता है ब्लास्टोइस जैसे पोकेमॉन को। लेकिन फिर भी अगर एक बार टीम फाइट में उसने यूनाइट मार दिया ब्लास्टी ने, हट जाएंगे ये सब। अबे एक बात भी घुसता है ब्लास्टोइस रैपिड ब्लास्टोइस की सर्फ याद है तुझे, क्या कर सकता है? अबे सर्फ नहीं चलाएगा वो, रैपिड स्पिन चलाएगा। घुसेगा वो, मैं बता रहा हूं सेंडर्स के बाद घुसेगा वो, मुंह पे घुसेगा एकदम। अबे भाई ट्रेवनेट जंगल कर रहा है। फिर तो सर्फ ले रहा है शायद, हो सकता है चांसेस है सर्फ लेने। ए भगवान 113 कर रहे हैं। ये सस्टेन वाला गेम खेल रहा है, मतलब लेट गेम वाले हीरो से सारे। क्या कर रहा है ये जी? मर गया। क्या देख रहा हूँ मैं? Nouns esports trying to find it. Overlord babysitting 2 players up top. A lot of people babysitting today. Spragos says that Steve is just trying to get over to this arena and take अरे वो हो जाता भाई, ओवरलॉर्ड है वो। Overlord already level 5 here. I mean, बीस भाई देख रहा है, 20 भी आने का है, कितनी जल्दी फाइट। तो हमारा बाय चांस चला स्टैक करने जाता है, मर के आ जाता है, स्टैक भी नहीं हो पाता। gets it done and gets out of static here as Blackhand Curious is just working on that fish going to क्या स्किन थी रे? अच्छी वो देख भाई लुकारी को देख। trying to get it done, barely making it out of there. The tree just punching into the air right now, saying, "Come on back, I want to fight." Overlord not concerned. अरे बच गया ब्रो। I'm about to send you exactly where you're from. Total OP. Ghost type. Let's get it done. Overlord darting through, catching a mean reset. अभी ये bully Jump करेगा। back into the action. Big question mark. Of course it is. खत्म भाई, सरीना खत्म है। दोनों का पोर्टल। क्या है रे? Beautiful play right there, using ये गया, that सरीना fish गया। to get the reset on the extreme speed. Gallo at the same time looking for a score, but they might go down for their trouble. Whoa! Tree made it home. Yeah, a nice little portal right on. They're going to try and score. If Blackhand gives up on it, they get free points. Otherwise, they get a good reset. अरे बाप रे, खत्म भाई, ट्रेवनेट को भी दे दिया। Overlord on this Lucario, just so incredibly mean. Goodbye. Even Elo getting into the action now. Those two are working in tandem very well, stifling the tree, chopping it down one limit at a time. Here we go. Some big scores up into the top path right here for Blackhand. Looking great. चिन्मय ने ये जो 21 2 लेवल का होगा। भाई वो देखना 9 मिनट के पहले ही हो गया वो लेवल 5 का। Getting into the face of this Blackhand squad, as that's a big defender type Pokemon. Looks like no one from Blackhand is down here except for Slash, just trying to defend here in this bottom path. अबे इनको बस T2 का प्लान वो करना पड़ेगा, बस लेवल बढ़ाओ। Not able to get it. Nice pickup there for Nouns Esports. The confusion into the barrier, huge. Yeah, Nouns Esports get a good amount of those. लुका देख रहा है 8 लेवल हो गया है भाई, जंगलर के बराबर है वो। Blackhand has 2 players sitting at level 8, and that's going to be huge. देख almost 9 touch. Not seen much of yet is Jungle Book. वो अंदर घुस रहा है सीधा सीधा। हो गया 9 here for जंगल से ज्यादा लेवल। अबे खत्म भाई, सोलो कैरी है, खत्म है भाई बंदे। Get a secure here as they just take over to level 9. Redmond with a big time engage, they're trying to get it done, but JB scoring it, the KO. अच्छा माइन की वजह से नहीं ले रहे ये लोग। The book doing great, Slash holding it down. वे रीसेट हो गए क्या ट्रेड? अरे माइन की वजह से नहीं लिया उन्होंने। माइन पे लास्ट अरे है ना। अंता? But Curious knows that, and they're किसके getting in अंदर the नहीं लिया? pocket. They're falling down. Gatlu comes through, and it's Slash और that Black takes hand, down Black hand, Blackhand, Black hand and they're going to turn the tides on Nouns Esports. They're going to see how many points they can score and how many Nice, they can take. Slash with the big old egg and the big old secure right here. We've got a bit of a fight happening right here as they're being pushed into this goal. Gatlu trying to take them back towards the base, and it looks like Nouns Esports is going to back off. Good defensive bliss assistance onto the book by Slash to make sure that they don't go down and send that high level experience to Nouns देख भाई Esports लुका and रही allow है them to catch up भाई, that. बुली कर रहा है भाई बंदों को। Coming in here, level 10 Sorry. Lucario right now. मजा ले रहा है भाई, Getting caught माइन दिया। out possibly by Brub. This would be huge. This खत्म would be भाई। a huge KO if they're able to get it. Confusion is up, but they miss.
Bruv is absolutely surgical with those walls and holding it down in the face of two players is admirable, but Elo with the perfect hyperspace hold, getting Overlord out of danger and right back into the action. 9 इनके पास 3 ही यूनाइट है बड़े भाई कुछ करेंगे वो लोग. They do not want to let it go, and big Unite move here from blastoise. They might be pushing this thing as here we go. We got the rapid spin coming in, we got the Unite moves pushing, and that Rotom looks like it could be. Oh no! अरे Rotom गायब हो गया भाई. वो जब वो जंगल में कर रहा तो कर भी लेता ब्रो. blastoise. नहीं rapid spin चल रहा है अभी. Rapid spin water spout. And Book, Elo, and Curios are just going to decide to back off. Wow, what a ton of fighting happening here early, and you can see Blackhand looking up. All of their Pokemon are very high level. अब कितना प्यारा लूका चला रहा है ये लौंडा. वो तो अभी खुद का गेम खेलता है. Overlord is known for getting these. That's why last game when I said only level 11, but this is way further into the game than this is right now. They're at the 5-minute mark already sitting at level 11. We've got Dreadnought coming up here in 20 seconds, and this is going to be a big fight. We've got Unite moves only on a few Pokemon for both of these teams, but one of the big ones, we've got the Hoopa here for Blackhand, able to bring the entire team down to this fight, and it looks like now it's just ticked over as well. Yeah, Blackhand, Cinderace, Jungle Book just picked up their Unite move, and Blackhand wants to kick this action off, and they're looking at Bruv early. That wall comes through, but it can't stop the big hoop on bound. Jungle Book's kind of fended off as Slash is playing very far forward. Mr. Mime's coming back, but nobody's down just yet. They're putting the pressure on Overlord. Is trying to converging on Dreadmaw. Keys is as well. Redmaw's caught on the backside. Here comes Overlord trying to E-speed through, catching all the resets through the bees. Showtime. Spirit Fingers coming through for Bruv, trying to deal in some damage, but nobody's down yet. This fight is going on. Keys is pushing far forward. It's like they used two Unite moves. Gattle's all over Dreadnought. Trevor and Unite comes out, and they're collapsing. That's a fluffy tail on Dreadnought. Who's going to take it? The Dreadnought's going to take it. They're trying to throw damage at as fast as they can. Curious comes through the KO on Blastoise. That Dreadnought's taking off the line. It's the Book sorting it out as Gatlu's putting the pressure on. 3 players down for Nouns. What a fight. What an incredible fight there. Blackhand takes that after every single Unite move gets thrown in the book. And भाई ये तो dominate कर रहे हैं bro. लूका carry कर रहा है भाई. लूका डिप है भाई. Come on, somebody else on my team needs these, right? And Book rolls through and says, yeah, I got you. I think those are my bees actually. Now that I think about it, I'm going to go ahead and take those. अब क्या करेगा सोच लो. Possibly going down. Gatlu trying to steal it, trying to kidnap this Rotom, bring it back. Oh, and they're not able to get it here. Secured by Blackhand. Absolutely great. Jungle Book did their efforts make that a KO streak of 2. They're sitting on the goal zone and they absolutely shatter that thing. And Blackhand is looking very strong in this one. Now the question is Blackhand going to push this or just get more experience? Next game में ये आने वाला है शायद इनके तरफ से. Nouns वाले ये ला सकते हैं अब 10 लोग रो. Level 15 by Zapdos, we'll see. That's a big question mark. We already have 2 players level 13, 1 level 12, and they're going to try and push that advantage as we look across the way, and Nouns is struggling to find experience on the map. Let me tell you, the level advantage in this game is huge for Blackhand. They already did so well at that team fight at Zapdos last game, and this game, they're way ahead on levels. I like how Overlord pushes forward to get vision and is so confident in their escapability. They see 4 players for Nouns and even hang out just to make sure everybody on their team knows, hey, there's 4 up here. We're going to have a level 14 Jungle Book for this. I mean, Cinderace is just already so incredible at level 14. And then you Jungle Book play and you think, wow, this might be the best Pokemon in the game, or at least one of the best players in the world. Slash is trying to buy some time, gets a good reset here. भाई ये बंदा Overlord तो भाई अलग ही लेवल का बंदा है. Will spawn on the map, but it'll be taken away immediately when Zapdos hits. भाई अकेला खड़ा है वो सेंटर में. Blackhand is just completely zoning out Nouns Esports. They're gonna have to find a way, and it looks like they're actually jumping over into this bottom bush right here. Oh, Blastoise actually heads back out through a very sneaky portal. भाई फिर भी इनका क्या बोलते हैं? Everyone resetting in this moment. They're not ready to fight just yet. We'll see who ends up firing the first shot as Bruv looks for a big score. And it looks like Blackhand is moving into fight. They get that score and they're moving forward. Unite moves are coming out. That's a big Blastoise Unite. And they see who they catch up. 1 player down for Nouns already. They're moving through. Bruv is getting low as well. They're playing far forward. They're playing far forward. Jungle Book is down. And that's a huge player. Look up every Unite है. Numbers advantage for Blackhand. Look up every Unite है. Adasu's trying to do his Tremend कर सकता है, रोक सकता है Tremend. मर गया. Overlord गया. Going down quickly. Curious is waiting. Lisi अंडा दे सकती है. हाँ अंडा. Puts the protected. भाई.
side anyways. And now Nouns Esports are on the verge, but nobody is really there for Blackhand. Just Elo holding 25 points and scrambling, and they can cut them off. Big Unite does. Taking it into the air, 50 points here from Slash. They just can't stop it right now. 307. 169 as we've got a भाई टॉप पे पुश आ सकता है 407 407 169 Nouns Esports has to mount a comeback. Yep, and they're going to give up this outer tier goal zone here, and they're going to try to defend the other two. Jungle Book just dealing in some damage as Geese catch a reset, and Nouns Esports is looking to push. अभी पुश हो सकता है इजी अभी है शायद अरे इनकी टीम टैंकी भी है देखते भाई अगर लूका 35 seconds left to go. Nouns really needs a win here in this match, and they've got to make a big push right now. We got Slash going for the back half, and Nouns Esports hasn't really started the push here, as Jungle Book is just all about getting experience and trying to get their Unite move. एक और गैप 40 को गोल उन्होंने बेच दिया Even if Nouns scores right here, it might not be enough because of these points right here. Nouns is putting in some points into the top half, but too many of them Blackhand able to defend. The Unite move भाई ये मैच भी Blackhand का अपना काम तो किया उसने game number 2. Let's go North America. Another strong showing by Blackhand, completely reversed from what we saw in game 1, where they were struggling to keep up in experience. This time they got out of the gates quick, got some quick KOs, and gave up that lead. साले सुकड़े कैसा खेलता है क्या कमाल खेलता है भाई मेरे को भी लूका सीखना है अब मैं ऐसे चलाएगा भाई मेरे को खेल से मतलब नहीं जो गेम नहीं चलेगा तेरी अच्छा चल रही है अबे भाई MVP ले गया भाई ब्लीसी भाई जो घुस रहा भाई वो 4 बंदों के बीच में 4-5 96 का डैमेज है उसी का सबसे हाई डैमेज है हाँ हर गेम में 1 लाख के आसपास ही डैमेज किया उसने 2 गेम में तो 1 लाख के पार है अरे मेरे को टीम में ले लो सेंडी को लात मार के निकालो उससे अच्छा खेलेगा मेरा लूका मेरे पास है गाइस टेंशन नहीं है ओवरलोड का मेरे पास ओवरलोड है शोगन है मेरे पास शोगन का मतलब समझते हो शोगन to find some success here. They have to win 3 games on the hop to bracket reset into another best of 5. हमारे ओवरलोड हमारे पास है. Needs to just win one of the next 3. Take a look at this here. Blackhand just dominating. भाई वो 9 मार्क के पहले ही लेवल 5 हो गया था लूका उनका. नहीं अभी भाई पता नहीं कैसे हम तो कुत्ते की तरह मार खाते हैं. Kind of fallen out of favor lately, but obviously. तूने उसको नहीं देखा बाय चांस को स्टैक करने घुसता आ जाता है. वो एक ही स्टैक में भाई लेवल 5 हो गया वो. क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं? देखना वही तो देख इधर क्या करते हैं. देखा नहीं कभी. Yeah, huge fight. सही में भाई. Overlord, by the way, just dancing around, moving through the bees, getting some health back, running away from Brubs. Unite move right here. This was the massive, never-ending. तो अगली बार अपनी टीम के लिए ऑडिशन रखना वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए. अभी से खेलना शुरू करोगे यार. अभी तो देखो अल्फा मेरी टीम में इकोलैश है. अगर तमिल खेल सका तो शोगन है और इकोलैश है. इको खेलेगा ना मेरे साथ खेलेगा ना. खेले रहो. धोखा नहीं लेगा ना भाई. नहीं भाई. उससे सूरज जैसा धोखाबाज सूरज. Tanky Pokemon with tons of HP. लोग हैं भाई हमारा जोड़ा पक्का है और कृष्णा को भी खिला सकता हूँ मैं. क्या लगता है कृष्णा हमारा ब्लीसी खेलेगा? तुझे पता होगा तुझे ही पता होगा मैं देखा उसका गेम प्ले. ये क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है. क्या बोल रहा है? कृष्णा बहुत अच्छा खेलता है मैंने देखा है. मतलब उसको मैं हुपा की प्रैक्टिस करवा दूंगा. ब्लीसी तो खेल लेता कभी कभी लेकिन वो यूनाइट नहीं देता पर सीख जाएगा. मतलब अच्छा है उसमें कोऑर्डिनेशन. तो कृष्णा तू भी मेरी टीम का मेंबर बन सकता है ठीक है. अभी चांस है तेरे. सब भाई वो रोज एक्टिव रहता है यार. रोज टीम में खेल रहा है. The soft boiled with the egg bombs. I mean, with the और अभी ये लोग अल्फा और इसकी जोड़ी गजब जमी है. I mean, it's been great from top to bottom, and that's exactly the type of अगले साल अपन चलेंगे यहाँ पर. If you expect Pokémon Overlord to carry. Now Blackhand is playing. टीट्स के साथ बगल में खड़े होंगे. इधर वो शिकारी होगी. खाना कैसे खाना? मैं उसको सिखाऊंगा. Championships and they become the world champion.
no question as to what team is the best in the अबे रुक अच्छा मेरे को ना ये भी ब्लास्ट ऊपर ट्रेनिंग देने आता मैं। हाँ भाई कोच बनाते भाई तेरे को। अबे फिर से ब्लास्टोइज क्या सिल्वियन ले लिया ना उन्होंने। देख सिल्वियन इस बार उनके पास सिल्वियन तो लिया है कि ब्लास्टोइज क्या सोच रहा क्या लूं अभी ओवरलोड वापस आ गया एजी में पुरानी स्ट्रेटजी लूका नहीं खेल रहा क्या अभी उनके पास दो चांसेस और है। ओवरलोड अपने अपोनेंट को कंफ्यूज करता है ये मैं समझ गया। वो हर मैच में पोकेमॉन चेंज करता है वही भाई अभी ये पता है शोगन परी को अभी ये लोग रिलैक्स होके खेल रहे हैं क्योंकि इनको पता है 2 राउंड तो हमारे आराम से हैं। इजी है भाई एक ही राउंड जीतना है। इनके ऊपर बहुत लंबा प्रेशर है 3 मैच निकाल ले हैं। कुलदीप भाई हुप्पा की ट्रेनिंग में देने में आऊंगा। कुलदीप बोल रहा है हुप्पा की ट्रेनिंग देने में आऊंगा बोलते। सीख लेना भाई कृष्णा भाई ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर आ रहा है। कुलदीप ने तेरे टीम को कुलदीप वो वाला टीएफ का हाँ मैं समझ गया कुलदीप। हाँ भाई सीख लेना। Here we are, Nouns Esports, your purple team, Blackhand, your orange team. This is the grand finals, and it could be the last game of the Pokemon Unite World Championships. Here we go, Blue playing early, trying to keep Curios out from getting stacks, but that's a fruitless endeavor as they back off. Geese and Bruv there for the support. Curios in this bottom path. It looks like Overlord going to be on the top path with the sword. We got the Lord of the Sword here in the top path trying to deal with Red Mazzarina. अरे फार्म मिल गया। Back on the mill गया बढ़िया। Level 4 power spike, and they're going to try and leverage that in the face of both, and of course, the high edge that takes so long to level up into the Aegislash. वो ब्लास्टोइज लेके जा रहा है आधा जंगल शेयर कर रहा है। नहीं ये सिंडर्स इनका क्या कर रहा है मतलब 4 लेवल करके उसको स्टैक करने नहीं दे रहा। अरे नहीं वो अर्ली डोमिनेशन करने आया था ना सिल्वियन उसके लिए ऊपर आया था वो उसके ही दोनों छोड़ के। सिंडर्स का है ना हर गेम ऐसे ही किया। अबे ऐसा वेट क्यों करता है ये मारने से पहले? मतलब अभी वेट कर रहा था ना सिंडी पुराने मारा मतलब एकदम से वेट करके मार देख रहा था कोई ऊपर आया कि नहीं। स्टील हो सकता ना इनवेट स्टील वगैरह तो सिंडी पर पाइप का नहीं होता मतलब वो लोग वेट करके कर रहे हैं। सेंटर बेड़ा हट जाओ अब ये लोग 4 नीचे पुश कर रहे हैं। देख अबे वैसे सिल्वी अच्छी काम कर रही है। हाँ इनका सिल्वी अच्छा चलता है। अरे वो देखो ऊपर जंगल घुस गया। नाइस रे नाइस इनवेड। अबे कर दिया उसने इनवेड कर दिया लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अबे नाउन को घंटा फर्क नहीं पड़ता उनके पास में सिल्वियन है उसको उतना फार्म नहीं चाहिए वो आधा छोड़ ही रहे हैं। वो है ना ये देखो ब्लास्टोइज गया लेवल। सेंड्रेस 7 का है जरीना भी 7 की है। भाई सेंड्रेस भाई रंडा दे दिया उसने। Out of danger. Jungle Book looking great right here. Trevenant का रिटर्निंग looking for their वही देख रहा था फिर क्या हो रहा है। भाई वॉरलॉर्ड पे दे दिया। Astonished that they got KO'd by that double sent pack. क्या मार दिया उसको? हाँ मार दिया। Back onto the map. There we go. Redmaw just charging up that Zarina's queenly majesty right here as we have bees spawning here in this bottom path. Ooh, Elo able to get out of there as they secure the bees there in the bottom path and start heading down for Dreadnought. Hard rotation here. Blackhand's going to show up in short नाइस order. रे भाई इनका लेवल बहुत ज्यादा है इस मैच में नाउन अच्छा है। अर्ली गेम में इसको सेव करना पड़ेगा सिल्वी को। Pushing forward, just trying to zone them out with that hyper voice as they get ready here to possibly. वो फार्म ही नहीं छोड़ रहे सिल्वियन को देख आगे घुसी पड़ी है वो तो बस्ट कर रहा है। अरे what a sneaky boy heading into भाई ऊपर ले गया भाई पोर्टल भाई। भाई ड्रैगन कुछ काम का नहीं है ऊपर है ना कर लेगा भाई स्टील बेकार है भाई। वो तो अपना गेम खेल रहा है। बस सेंडर्स इन्वाइट करके आ गया भाई। खत्म मार
from the rotation back, अच्छा a देख pincer attack jumping in here, huge unite अबे move, कुछ taking मरा ही him नहीं down. Let's go unite के Jungle अंदर Book. Curios moving forward, one player down for Nouns भी Esports, पुश but कर they're रहे putting together a सेरीना pretty good बाप push रे here. Egg to the book, and they're keep pushing मार forward. दिया ट्रेवल Overlord coming through. Sylveon getting KO on the tree. Overlord getting KO on Zarina. That's actually good. Jungle Book just heading back here. अरे भाई ब्लास्टोइज नाव का हुआ ही नहीं भाई और अबे ऑलमोस्ट यार ऑलमोस्ट भाई यही तो बंदा है भाई Overlord said this sort's too sharp. सेंडी के रोटेशंस अच्छे हैं इस बार Once again putting pressure on up and out in the top. अंडा से ले सकता है देखो It's going to be difficult for Nouns to outsecure नहीं ले पाया या स्टॉर्म They've got the stomp. Here it comes. No, taken कट down. गया यूनाइट कटा सेंटर्स को उठाने वाली थी यूनाइट कट गया उसका मिस भी मारने वाली है Curios is trying to leash them back with a बच big गया leash of its own. Huge push is what अबे they're ये तो looking इनको for. ही Get मिल them on the गया goal zone so this Rotom can hit. मैं ब्लास्टोइज का लेवल अप ही नहीं हुआ है क्या करेगा डिफेंड थोड़ा एक्सपीरियंस Blackhand's going to get some points in, and they're going to say 5 मिनट होते आ रहा है भाई ब्लास्टोइज लेवल अप ही नहीं हुआ है Yeah, there you go. देख Nice रहा है overdunk here for Blackhand. And Blackhand is just playing phenomenally here in game number 3. They're playing like they're champions, and they're trying to take it home right now. पूरा फार्म खा रहे हैं लोग पूरा पूरा ब्लैक एंड पूरा फार्म खा रहे हैं hitting on the retreat. Another odd no for them. Here we go. Overlord slashing it up already level 10 here. But you know who's a pretty high level too? Yeah, it's that Jungle Book. Level 12 Cinderace here at the 5-minute mark. Desu not far behind. Or excuse me, Gatlu not far behind on the Blastoise. That's going to be a point of contention. They have their Unite move, and that's a great way to set up a great engage for now. And here we go. The Unite move's coming in from Hoopa. It looks like everyone's backing off a little bit. The Hyper Voice coming in. Hoopa हमेशा पहले खोलता है Unite. Overlord's looking for a way, and they hit a big wide. झाड़ियों का फायदा फुल No sense in engaging into what Nouns Esports ब्लास्टोइज पे यूनाइट है बीसी गई They're going to try to get it done. Trevenant Unite back सेंटर भागी KO on the Blissey. They're moving उनके बीसी को पहले मार दिया यूनाइट ले भाई सिंडर्स भी गया भाई सिंडर्स भी खत्म हो गया and that's Redmaw absolutely popping मिल गया अबे रीसेट हो गया यार Redmaw is all over this अबे फिर से हो पाएगा Blackhand could not make it home. भाई ये तो बंदे ही मारने जा रहे थे ऊपा दे ऊपा को मार पहले छोड़ उसको अरे ब्लीसी भी आया है इधर चलिए सिक्योर्ड है ऊपा को मारा आ गया Redmaw getting it done. They got all the अरे नहीं रे ऊपा रहा आई हेट ऊपा भाई गेम बदल देता है भाई और क्या पहला ओवरलॉर्ड यार Can they take it down on a Desu? They do, and now it's Porgy's trying to hold it down. Here we go. Overlord just pushing forward, looking for a KO right here as Curios pushes these Bs towards the side of Blackhand. Bruv chipping him up, trying to steal that B out from Overlord. A fruitless endeavor. Super. And Elo working through this Rotom. This is going straight in the face of Nouns. Yeah, big pressures. This Rotom's going to head towards Syndicate Nouns Esports. Something they're going to have to deal with while Blackhand has their gradient है all बोल the रहा हूँ experience. इसलिए उसको gradient नहीं दिया था लास्ट गेम Turn the focus internally onto their side of the map, get as much of those wild Pokemon as they can, and avoid big time engages to Blackhand. Try and find a pick. Don't go for the big team engages. But look at all the static that's being caused in the bottom path. They need to send resources down there as Blackhand is being relentless on that push. Yeah, it looks like Slash maybe getting a little too far, getting chased down here by God. आखिरी 2 मिनट आने वाला है डिसाइड करने वाला है कौन जीतेगा डिसाइड आज भाई Overlord's coming in. Big engage rapid spin water spout going to try and find it. They're going to catch a reset here just in time. Great work by Geese to keep them out of trouble. 1 minute left until Zapdos. अबे पूरी 20 ले ली रे Nouns Esports in a solid position. अपने घर पे लेके सीधा पूरा Nouns actually win a massive fight at Zapdos. They haven't been able to do it yet. Bruv gets a KO on their counterpart, and of course Overlord keeps trying to level up. Serena farm कर रही है. Big level 13. That's who I'm looking for. They're going to need them. Serena का level high है. If they want to take this पूरे गेम में अभी सबसे ज़्यादा. Blackhand's bringing. That's right. That's a level 14 Serena, and we've seen how powerful Serena's been all day. If they're able to catch out this Cinderace or this Sword, they might be able to win this fight. Right now, we have 15 seconds until this Zapdos. This could be the last Zapdos of the World Championships. Blackhand is looking to put this thing away ये लास्ट के 2 मिनट है 2 मिनट जिंदगी बदलेंगे ये डिसाइड करेगा जो है इधर फाइट स्टार्ट हो गया Curios is all over Gatlu. Terminate both mark. They catch a big time reset. All that damage fades off. Sword goes in.
Overlord tries to find the wide guard. भाई And are they going to engage off of this? The egg goes off. Here we go. फैसला हो गया, जीत जाएगा और Big जीत जाएगा move catches all of Blackhand. They're pushing forward. Bliss is hit. That's the first game. One player down for downs. They're going to push forward. They're going to try and convert. They're converging on Bro. You're going down. See you later. They're moving forward. Overlords are relentless all over Dacer. That hyper voice hasn't hit any notes at all. इसको छोड़ने वाला नहीं है वो Give him another one. 4 down. Just like blastoise. Gonna try and sort this thing out, but they are tearing through the Zapdos. They're tearing through the Zapdos. And this is Blackhand's world. We're just living in it as they're collapsing on this Zapdos. And this could be it. Blackhand kicking down this Zapdos. Just a few hits left. Blackhand secures it. The final Zapdos that could be it for the grand finals of the World Championships, as the points are going to be raining in here. Nouns is going to do everything they can to push them back, but Blackhand is relentless. The plates are full with Hundo burgers like Jughead, and they're going straight in. टीम को हराया वो टीम को 3 मैच में हरा दिया लोग. KO streak a 2 for Overlord. This lead is stretching out like taffy. Nouns esports is back against the wall. Kick through it. They're not even on the same block. They're not on the same park. They're not even the same stage. ना हुपा करने देगा ना BC करने देगा भाई. Where they're at now, they're up against it. Where they are is Blackhand's world, and we might all be living in it. Blackhand is 30 seconds away from becoming your world champion unless Nouns can do something about it. Overlord just putting some more gravy on top right here. 25 seconds right now. There just aren't enough points to score. There aren't enough members of Nouns esports. Adesu with the Unite move, but I think it's fruitless right here as we have 15 seconds left. Yeah, they're caught out. They're on the backside of nowhere. Overlord's looking for a gauge. They're trying to pad the stats. That's a huge reset timer. Blackhand, baby. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Blackhand is your world champion of Pokémon Unite. अभी चिल्लाएंगे भाई जीवर के. America! Blackhand, look at them, the best team in the world. EU has burned to the ground here in North America. Undefeated रहे थे वो upper bracket से भाई. In convincing fashion, not dropping a single set. ये has to be champions जो हारे नहीं. Bell, top to bottom, they're going home with a big trophy, and I hope you got the right size suitcase because you got some hardware to carry with you. You don't do it. देख रहा पोल की power. You don't do it. पोल की power देखा. बादल सबने बदले. What a run! You cannot beat them. No one can take them down, not even giving up a single game to one of the best player of teams Pokémon Unite in the Overlord. world. No Now doubt. esports, amazing performance. But Blackhand, what a championship run, what a championship team. We're seeing some legendary levels of sportsmanship between these two squads. Nouns esports have been up against it all weekend long. They have scratched, clawed, and fought their way to this point, to the grand finals. But here in London. Would it be the 1-1-3 meta? Would it be Lucario? Would it be Japan? Let's hear it for Kyrios. Let's hear it for Blackhand. What it is Blackhand, baby. The best team in the world. Pulling out many different strategies to beat all the teams that came before them. Blackhand, the number one. We were talking about Blackhand. They were in the top 4 of every final at the Pokemon Championship Series. मामे और एक ये ओवरलॉर्ड दोनों प्लेयर ऑसम लगे. They win. They stepped onto that regional final stage, beat the brakes off of everybody. They stepped on the world stage, beat the brakes off of everybody, and now they're going home champions. I don't know what else there is to say. The only thing I'm a bit bummed about is Excellent, their coach, can't join them right now, but I know they're going to share that trophy with them. I mean, what an incredible performance. What an incredible performance from every team, every region. Let's take a look at it. They're crying, we're crying. Here we go. The big moments from this final match. Blackhand and Book getting it done. Blackhand pushing forward, and they took control early in this one. Yeah, absolutely. They're just looking phenomenal in this series. I mean, when you don't lose Overlord ले गया भाई MVP. Overlord carry भाई. तो होना ही था, obvious की बात है. Not only did they not lose a single game, they weren't playing the same composition. They were adapting. They were
adjusting. They were seeing what the other team was bringing. It might not have been a character change, but it was a loadout change, an ability change, and they were just throwing so many different looks at these teams. Nobody could really adjust and catch up, and Blackhand was able to deliver on some big W's. Here we had this big final fight. Nouns doing everything they can to take down Jungle Book. We just had such amazing support from Blackhand. They never let that Pokemon fall. They just let him go crazy. The Lord of the Sea, Overlord, looking amazing. जो गोल देख क्या रोक रहे, वो karma दे रहे हैं, देख. गोल नहीं दोगे हमको, गोल नहीं दोगे लोग. Don't forget, Blackhand is getting instant karma. Their name etched into the history books of Pokemon Unite. Blackhand is, of course, representing the Pokemon Unite community on the world stage, but they are also going home with a big chunk of money. That's right, $100,000 to Blackhand. Look at that celebration. Let's go. Overlord, the Lord of the Sword, our MVP, the player of the game, in the final match, the world champion. I don't think you can draw it up any better than that if you're Blackhand. Overlord has always been in the room for them and always doing a hard time carry, and they're feeding them and getting it done. Hard earned, well earned, Blackhand. And as you can see, we are getting ready to present them with their trophies on the main stage. Let me tell you, Overlord, I mean, casting this season of Pokemon Unite has been an absolute अच्छा लगा यार मेरे को उसका लुक भी अच्छा लगा, एजी में भी उसने फाड़ा है. उसने सीधा सीधा सिल्वियन को टारगेट दिया. पता है, उसने सीधा सीधा टारगेट पे हिला है सिल्वी को. अबे निंजा से उसने पेंटा किया. कल के मैच में. अब मैं फीलिंग नहीं बता सकता मेरे को कितना अच्छा लग रहा है. ये फर्स्ट पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप था ना. अबे 80 लाख रुपए भाई, 85 लाख. हाँ भाई, देख ले भाई, ये $100,000. $5,000 रेवेनेंट को मिले हैं. Because you're getting 75K across the board. Renaissance 65 and T2 rounding out our top 4, 60K as well. And you can see those numbers going all the way down. 75 लाख. 13 teams getting 75,000 रुपए तक टीम को. हजार नहीं है, डॉलर में. अरे हारे नहीं तो 75,000 एक प्लेयर को मिलेंगे ना. 80,000 रुपए एक प्लेयर को जाएगा. 80-85,000 बस. Well, Blackhand's going to have to defend this title in 2023, and you better believe that trophy is going to be sitting behind them whenever they're doing anything. Whenever there's a picture, they might just pull it in. You know, selfie, bang. Wait, you're not even at home, you're in a restaurant. हाँ मिलेगा ना भी. You just carry that wherever. वो क्या खड़े हैं बंदे पीछे. सुपर टीम ट्रॉफी देंगे. फेंकेंगे. अब हम कहीं नहीं जा रहे. अब हम कहीं नहीं जा रहे. I might have just threatened to steal their trophy. Sure, sure, I might have done that. You know what? You can earn the trophy yourself in 2023 if you measure up to this team. I can't do it. I can't do it. I'll tell you that much. सारी सुना है हाँ Without question, सुगा डैडी नहीं बनने का. the best. We are ready for their big. ना ट्रॉफी नहीं दे रहे. क्या कर रहे थे फिर? देखना भाई, ट्रॉफी दे रहे भाई. नहीं. बीट्स नहीं है भाई. अबे कौन बीट्स आ गई? अरे मेरी टीट्स कहाँ है? Hello everybody, welcome. Please give another round of applause as we welcome back अरे यार इसको भगाओ यार, टीट्स को बुलाओ. the Pokemon Company, Tsunekazu Ishihara. ये पोकेमॉन यूनाइट के डायरेक्टर्स आ गए. भाई टेलीफोन बूथ से बुलाया भाई इनको तो. Let's give a round of applause to the Pokemon Unite competitors that made it to London for the अभी हेड आ गया बे पोकेमॉन कंपनी का. All of them. Let's give them a round of applause. It has been an amazing first year for Pokemon Unite. These trainers have been practicing all season for this moment to be the first ever Pokemon Unite World Champions. Together they have battled across Eos Island using great teamwork and strategy. Let's celebrate their accomplishments as we crown our first ever champions and finalists of Pokemon Unite. Are you ready? First, our finalists from Europe, Nouns Esports. First, Adesu. कितना हैप्पी बंदा है ये. कितना हैप्पी बंदा है. Calling Adesu. उसकी पर्सनालिटी से एकदम अलग है वो.
ज्यादा ऊपर नहीं पहना उसने मास्क। ओ भाई सबको एक एक ट्रॉफी मिल रहा है। हाँ हाँ क्योंकि सोलो वो गेम है ना, टीम गेम, तो पर प्लेयर रखेगा ना, ऐसे में ट्रॉफी कौन रखेगा? ऐसे में हर एक प्लेयर रखेगा ट्रॉफी, समझ रहा? हाँ हाँ 5 लोग की गेम है ना इसलिए। मेरे को पता है यहाँ पर वो मोमेंट से याद आ गया जब हम लोग खड़े होते थे नेशनल्स में, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज पे। अबे बहुत, अगर हार जाते थे ना तो बहुत अफसोस होता था कि सिल्वर आया, सेकंड आए। मतलब मैं 2 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ नेशनल में, मैं सिल्वर मेडल आया था मेरा, मैं 2 पॉइंट से चूक गया था, मेरे को बहुत अफसोस हुआ था उस दिन। और मतलब फिर उधर पे ऐसा कोशिश करते हैं कि अगले बार आएंगे तो यहाँ जीत के जाएंगे। सो एक इमोशनल रहा, बहुत बहुत यादें रहती हैं यहाँ से। भाई साल भर प्रैक्टिस करते हैं यार इस मूवमेंट के लिए। लॉल बहुत खुशी हो रही यार इनके लिए। Overlord and Elo. भाई क्या ही टीम है यार इनकी। Congratulations to all of our 2022 Pokemon Unite World Championship finalists. Let's give them a hand. We still have so much more Pokemon action happening here in London with TCG and VG finals happening tomorrow. Thank you again to all the Pokemon Unite trainers, and let's end with giving our finalists one more big round of applause. डिजर्व करता है वो, डिजर्व करता है ओवरलॉर्ड। भाई एक बड़ा सा ट्रॉफी देते यार। हाँ एक कहना था, एक ट्रॉफी बड़ा सा रहना था। दिया तो है सबको एक एक। जैप्टोस का दे देते। हाँ भी सही कहा। चलो खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया। World champions, dude. चलो पैक अप करो। मेरे को बताएं, बहुत इमोशनल फील हुआ बे, मैं बता नहीं सकता। मेरे को आंसू आने वाले थे कसम से बे, ऐसा लगा काश सपन होते। मतलब जो भी जीता ना, मैं हैप्पी हूँ उनके लिए। Proud to be part of this community. And these are 2 teams that you and I were fortunate to watch all year long and to see them on the biggest stage, in the biggest game. Last वाले हार गए बस। It has been absolutely incredible working with you, Jeff, Zoinks, this amazing crew. We're going to be talking to Blackhand here in a moment, but while they get that ready, I just want to say a big thank you, of course, to everyone watching at home. You make this game what it is. The community of Pokemon Unite is incredible. It is incredible. It is incredible. They showed up, showed out, and these teams performed and absolutely entertained as the day is long. They put on a show, and it was again speechless. You know, one thing I love, you've got Blackhand here, undefeated. You really want to answer the question as to who's the best, and without question, it is Blackhand. No doubt, they really cemented themselves there. But Zoinks is on stage with Blackhand right now. Let's drop it down for an interview. दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स, दुनिया की बेस्ट टीम। What is up, everybody? One more time, let's hear it for your champions, Blackhand. An incredible tournament win. You played amazing these last 2 days, let alone the entire year. What a run. What does it feel like to know that you are now the best Pokemon Unite team in the entire world? I don't know, I'm a champion. It doesn't feel real to me, dude. Yeah. It's crazy how like it अबे started as a भाई hobby क्या playing the बोला है game, बंदा, and now कितना like स्वीट है बे ये। met like 4 of the best friends in my life, dude. And now we're here, grand champs, dude. Oh, yeah, can we get an अबे क्या बोला बे वो, from the अच्छा लगा crowd? मेरे That को is उसका वर्ड सुन के। adorable. देखो उसने ऐसा कहा, मैं हूँ, Amazing. फाड़ दिया मैंने In सबको। this tournament, you went through it undefeated, match by match. What was the key to such incredible success? Oh.
उसने अपने जंगलर को क्रेडिट दिया। Okay. Because our jungler over here can't stick here on D-Night, so. All right, so a hot swap is what gives you the answer. Now, I just have one final question, and this is actually going to come from the coach of your team. They asked, who said it was okay to play Greninja Greedent? Me and Jungle Book. Okay, well, we have to give it to you. Can we hear it one last time for Blackhand? They are your Pokemon Unite champions, and they have been Blackhand. I'm going to send it back to the desk. Wow. Incredible. Thank you, Zoinks. Thank you, Blackhand. And here we are coming to the close of our World Championships. It has just been such an amazing journey, hasn't it, Dupe Snacks? Just the best indeed. The first ever Pokemon Unite World Championship is in the bag. Blackhand are your winners. I am the most fortunate caster in the world to have been here and cast this game. I just absolutely elated from top to bottom. Shout out to everybody that tuned in, everybody in production, everybody that made this happen. Of course, all the players, the entire community. You're beautiful. I love you. गाइस आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक आने वाले टूर्नामेंट के लिए। सभी मेहनत करो, आने वाले कोशिश करना, आने वाले टाइम में आपकी टीम, हमारी टीम, किसी न किसी की टीम यहाँ तक जाए और जीते। सो ब्लेसिंग्स काम आती है, हालांकि उल्टा काम करती है तुम्हारी, लेकिन काम आती है। तो अगले साल कोशिश करना कि हमारी टीम यहाँ पर खेले, ठीक है? इस बार रूल हटा दो, लास्ट वाले जो रखा है इंडिया के लिए कुछ रूल्स हटा दे, तमिल वाले, फिर सही है। शुक्रिया गाइस आप सभी का इतना ज्यादा सपोर्ट के लिए, आज की स्ट्रीम देखने के लिए। आज काफी हाई सपोर्ट था, आप सभी को दिल से शुक्रिया। लव यू सो मच गाइस। आई होप तुम्हें अच्छा लगा मेरे साथ ये टूर्नामेंट देखकर। मैंने डिसाइड किया कि देखते हैं और तुम लोग का आई होप मजा आया होगा। हो गया तब तक के लिए गाइस, चलो आबिल के लिए जाएंगे। आप सभी का शुक्रिया, लव यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो जल्दी से गाइस, नया देखो, कुछ नया सीखो, लर्न करो। हार रहे जीत रहे डजंट मैटर। नूब किसी को कहना छोड़ो, नूब प्रो ये सब छोड़ो। हर मैच से कोई कुछ ना कुछ सीखता है। जस्ट टाइम देखो, टॉक्सिक मत बनो, एक अच्छा कम्युनिटी बनाओ लाइक इन जैसे, और एक अच्छे प्लेयर बनो। आप सभी लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस। अभी के लिए गाइस बाय सभी लोग को, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच अगेन। टेक केयर गाइस, सिया कल मिलते हैं। कल हमारे टाइम पर तुम्हें मिलेंगे शाम को 5 या 6 बजे स्ट्रीम करेंगे। बाय गाइस, सिया गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। आप सभी लोग को शुक्रिया। कांग्रेट्स फॉर 50 सब्स। चलो भाई हम भी इधर स्ट्रीम इधर ही एंड करते हैं, क्या बोलते हो तो क्या भाई यार। ब्लैक हैंड ले गया भाई। ज्यादा हो गया स्ट्रीम, कितने घंटे किया है तूने? हाँ चलो कितने घंटे हुए तूने स्ट्रीम करके? खत्म हो गए यहाँ पर भी, आज देख रहा, रुक जा।